हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं आ चुका हूँ ब्रांड न्यू लाइव स्ट्रीम के साथ और कंटिन्यू करेंगे वैम्पायर गेम की स्टोरी को। वहीं से आगे लास्ट स्ट्रीम में एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि जो हमारा कैरेक्टर है जोनाथन, उसने अपनी सिस्टर को दोबारा किल किया। अब स्टोरी मतलब कि एंडिंग की तरफ जा रही है। मैं आज कोशिश करूँगा कि इस गेम को ज़्यादा से ज़्यादा प्ले करूँ और इस गेम को इस एंड की तरफ लेके जाएं, ताकि और जो न्यू गेम्स हैं, जो बहुत ही मज़ेदार गेम्स हैं, जिनका मैंने ट्रेलर्स वॉच किए हैं और उनको मैंने परचेज़ कर लिया है, तो भाई वो मैं प्ले करूं और या तो रिकॉर्डिंग करूंगा या इसी तरह लाइव स्ट्रीम के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है, गेम्स को। और कल मैं लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाया क्योंकि इंटरनेट का फिर इशू चल रहा था, तो आज ठीक है, सही चल रहा है। तो आई होप कि लाइव स्ट्रीम के दौरान कोई ऐसा नेट स्लो डाउन ना हो जाए। तो चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं, अपनी गेम की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं कि अब नेक्स्ट स्टोरी में क्या होने वाला है वैम्पायर गेम के अंदर स्टोरी में। और सबसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे प्रेस करो ताकि आने वाली हर मज़ेदार गेम्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। सो स्टार्ट करते हैं। ओके, देखते हैं कि आज हमारी स्टार्टिंग कहाँ से होती है और हम कहाँ तक जा पाते हैं आज की लाइव स्ट्रीम में। लोडिंग इतना टाइम क्यों ले रही है भाई? Blood. As I shed one last red tear for my fallen sister, I realize the entire world now revolves around this singular word. The epidemic that has stricken London is not the Spanish flu. It is transmitted through the blood via violent biting, turning survivors into frenzied immortals. I am Dr. Jonathan Reed. I am a vampire, born anew into an age of death and pestilence. While plotting factions close in around me, I am sworn to find the source of this epidemic. I am convinced greater perils are still to come. I know the answers I seek are hiding in our blood. ओके गाइस, तो हम आ चुके हैं वापस कैम में। चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट हो चुका है, राइजिंग फीवर। और लेटर है भाई कोई हमारे लिए, लेटी एशबरी इनविटेशन। तो भाई उस लेडी ने हमें बुलाया है अपने किसी जगह पे, तो लगता है अभी हमें वहाँ जाना पड़ेगा, उससे बात करेंगे, देखेंगे अभी नेक्स्ट क्या मिशन मिलने वाला है हमें। तो हम अभी निकलेंगे। पहले गेम को सेव किया है मैंने, आप यहाँ से रीफिल कर लेते हैं। रीफिल करने के बाद भाई कमरे में देख लेते हैं, मैप देखते हैं। पैन ऑफ ड्रैगन, चलो भाई एक बार रूम को देख लेते हैं। पानी, ये पानी मांगेगा। The flower's dying. It needs water. अब भाई मैं वाटर कहाँ से लेके आऊँ भाई, मुझे मिला ही नहीं है स्कैम में, सीरियसली गाइस। कहाँ से पानी लेके आऊँ? यहाँ भी पानी नहीं है। तो भाई चलो पीछे के दरवाजे से चलते हैं। भाई हम वैम्पायर हैं, हमें कुछ भी नहीं होगा, चलेंगे गाइस। और ओहो, इस गेम के मैं जहाँ तक मुझे लगा स्टोरी बहुत ही अच्छी है, लेकिन ग्राफिक्स और कुछ चीज़ों में अगर कुछ चीज़ों को और अच्छा करते ये गेम बहुत मज़े की जाती, लेकिन काफ़ी टाइम पहले आई थी तो कुछ कह नहीं सकते भाई। ओके चलो भाई भागते हैं, काफ़ी दूर जाना है। और अभी हर रास्ते में हमें बहुत सारे भाई सिक्योरिटी गार्ड, पुलिस वाले मिलते हैं, ठीक है, और बहुत तगड़ी फाइट होती है हमारी। हेल्थ भी हमारी बढ़ चुकी है, ब्लड वाला भी हमारा उतना ही है। ये देखो भाई खड़े हुए हैं आगे, अब इनके साथ फाइट करें या क्या करें? हम तो यहाँ से भाग के जाएंगे, फाइट नहीं करनी हमें इनसे। अगर फाइट की ना तो काफ़ी टाइम ज़ाया होगा, क्योंकि आज मैंने स्टोरी को एंड की तरफ लेके जाना है। ये करें फाइट और मैं भाग जाता हूँ। ओके भाई, मैं क्या भाई, मैं भागा भाई, मैंने फाइट ही नहीं करनी, मैंने फाइट ही नहीं करनी। ओ भाई यहाँ पे कुछ होने वाला है। You must prepare, child,
For the earth is bleeding and the harvest is upon us. Stay away! Whoever you are! This is no time for petty quarrels, my champion. Can you not hear? The famished queen has awoken. I am not your champion! But of course you are, son. As surely as you are the blood of my blood. I had to kill Mary! I have known your pain, child. Do not succumb to... Silence! I dismiss you, now! The land calls for a champion. All and everyone needs you. Silence! चलो भाई, हमें तुमसे बात ही नहीं करनी। तुमने Tired of all these puppet shows. हाँ भाई, इसको छोड़ेंगे नहीं भाई। जहाँ तक जोनाथन का ख्याल है, जोनाथन इसे छोड़ेगा नहीं, क्योंकि भाई जिंदगी बर्बाद कर दी यार इसने। कहाँ से जाना है, यहाँ से जाना है क्या? भाई ये क्या है? They want war. I'll show them war. Whatever Oh, this right. poor woman did, nobody deserves this kind of punishment. भाई वैम्पायर ही वैम्पायर हो गए भाई, सिटी में बहुत वैम्पायर हो गए। अब ये सब भी क्या पता वैम्पायर बन जाए, ये वाले भी। ये कहाँ से गया भाई? ऊपर से। चलो जिधर से भी गया, हम निकलते हैं आगे की तरफ। पहुँचते हैं भाई अपने लेडी ऐशबरी के पास। ओ भाई, ओ भाई, चलो भाई हम फाइट कर लेते हैं। ओए 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 ओए, ये तो फंसा हुआ है भाई। पहले हम इनको मारते हैं। ये तो फंसा हुआ है। ओ भाई, चल भाई। ओ सुपर पावर। चल बे पीछे हट। ओ भाई गैस गैस। ये तो मारा। तू मारेगा? ओ भाई लगे। अब उसको मारते हैं। ये तो फंसा हुआ है भाई, ग्लिच हुआ है। भाई एक और, एक और, आखिरी वाली। चेक करो भाई। हो गया भाई। लूट उठाते हैं भाई, लूट तो हम छोड़ते नहीं है। हाँ भाई, लूट लूट लूट। कहाँ से जाना था? ये रहा भाई, यहाँ पे जाना है हमें। देखते हैं यहाँ पे ऐशबरी के साथ क्या बात this होगी। is where she lives. यहाँ रहती है वो। What a splendid house. बहुत ही भाई प्यारा हाउस है। देखते हैं क्या बात होती है। Dr. Reed, welcome. How are you? As good as one can be, considering the circumstances. Yes. Death and affliction seem prevailing themes of late. Please, come in. We have much to discuss. I hope I haven't disturbed you. Not at all. Actually, I was counting on you visiting me tonight. How strange, this painting. Beautiful, melancholic, yet with a haunting dignity. Indeed. A long time ago, a friend asked me to paint this for him. But I kept it in the end. I did not know you were a painter, my lady. There are many things you do not know about me, young Ekon. Please, call me Jonathan. Please excuse my behavior, Jonathan. I tend to tease my friends when uneasy. What is bothering you, my lady? Your letter was quite alarming. We will talk about this in a few minutes. For now, I would like you to tell me about yourself.
How have you been since we last met, my friend? My sister Mary. She was made a vampire in the same way I was. She was the one killing all those people everywhere I went. Vengeance is a powerful force for those betrayed. Made vampire through careless error. Victims by surprise. In the end, she implored me to put an end to her misery. But still, I felt I had taken her life twice. I am so sorry for my accidental cruelty. Had I known your dear Mary was still alive, I would never have sent you to pray for her soul in that church. There is no need to apologize, my lady. Your words have been most helpful in these difficult times. Thank you, my friend. If only we could have guided your poor sister through her terrible nightmare. I came to the conclusion that my maker, whoever he might be a powerful vampire. Certainly extremely old. How have you reached this conclusion? He is the only immortal I've seen appear in an ethereal form. His voice, his words seemed ancient. It was disturbing. I am afraid you are right. The simple fact that your blood made Mary such a strong Ekon proves that you must be of ancient lineage. I felt this power, radiating like an aura every time he appeared. Most ancestral vampires of England were killed by the Guard of Priwen half a century ago. I wonder who your maker could be. You have no idea who he could be? Some of the ancient ones fled England. Some may still be in hiding. All I know is you, my friend, are a pawn in some secret and obscure game of chess. I think I should ask the questions, your ladyship. After all, it was you who invited me to settle this most urgent of matters. Fair enough, Jonathan. The situation is critical. We do not have the luxury for etiquette. Please do not misunderstand me. I would be delighted to discuss mundane matters and idle trivialities. If we survive the dark nights to come, we shall have all the time in the world to speak, you and I. For now, please follow me, Jonathan. I must say, your house is exquisite. One of the advantages of living forever is having the time to be selective with one's furnishings. I took the liberty of having tea served. You can still drink tea. Can't keep it down, but I do so enjoy the aroma. Let us toast to make-believe. And of course to your health, Jonathan. And to yours, my lady. Please, call me Elizabeth. So, my lady, why truly did you invite me here? I've been asked to deliver an official invitation to meet the Ascalon Club. Should I trust them? Of course not. Do not misunderstand me. They can be very useful, but I believe their long-term goals differ from yours. Should I lie to them? We all lie, Jonathan. It falls to you to choose your behavior. The most important rule is to show them due respect. Why meet them then? Because nothing truly important can be achieved in this city without their consent. They could be powerful allies in this current situation. Who are they? Really? They are the embodiment of vampire law in Britain. Some say they influence the destiny of the Empire. Some believe they merely protect it. Will they fight the Guard of Priwen? I doubt it. Fergal was Lord Redgrave's executioner forever and a day. By defeating that beast, you deprived them of a powerful weapon.
How many are they? Only a small number of powerful and deceitful immortals, all of them entangled in a sticky web of shadow cabinets, influencing trade. Why use you to contact me? Because they know we are close. The Ascalon Club has many spies. Their main occupation is gathering information, and then deciding how to use it. Have they threatened you in any way? Not at all. Their message surprised me at first, but it is only logical, considering the critical situation in London. Why not ask for your help? Since you are obviously a powerful and influential immortal yourself. You have to understand that I am invisible to the eyes of Ascalon, for I am a woman. That suits me well, as long as they leave me alone. They have done nothing but impede my investigation since I became known to them. Why would they want to see me now? I guess they now see you as Ascalon material. They must have found out what happened to your sister. Proof of the potent blood flowing through your veins. I'm not sure I can accept their invitation. I have seen their handiwork. How Fergal the Beast imposed the club's law. You have no choice, Jonathan. Even I would not openly defy Lord Redgrave, the chairman of the Ascalon Club. What can you tell me about Lord Redgrave? Who is he? Lord Redgrave is the founder and chairman of the Ascalon Club. Most mortals know him as the Earl of Bristol. He is rich and extremely influential. How old is he? How long has he been a vampire? Lord Redgrave claims to be the progeny of William Marshall, the most valiant knight who ever lived. If that is true, he could be very old. Have you met him? Only on rare occasions, for he never goes outside the club. And women are not awarded membership, even immortals. How powerful is his reach? The Ascalon Club may be the most influential secret society in England. Not all its members are immortals, but they are all very powerful. Any familiar or famous names? As the richest, most relentless British tycoon, Aloysius Dawson is considered ideal Ascalon material, and has been watched for years. They are not all immortals. How is that? The club is mainly comprised of political figures who seek the safety and expansion of the Empire. The most loyal are awarded immortality. If you are convinced I must meet him, I will heed your advice. Thank you, Jonathan. I understand your reluctance to brush shoulders with London's vampire elite. But we have no choice. Is the situation that critical? Yes. The Guard of Prewen has called for a second great hunt of our kind. And they will stop at nothing to eliminate us. Will the Guard of Prewen and the Ascalon Club fight each other? I doubt it. If Prewen really launched a great hunt, I think most of the Ekons I know would flee the country to escape the bloodbath. I think I saw them kill an Ekon on the way to your house. They seem to have a list with names. To launch another great hunt, they must have collected intelligence on vampire identities and whereabouts. They are a resourceful lot. Should we fight back? I will not be hunted down like an animal again. I admire your courage, Jonathan. But the best way to fight them is to put an end to the epidemic. This is the only way to clear the air. What is a great hunt? The first great hunt was launched about 75 years ago. In just a few nights, the Guard of Prewen located and destroyed most of the old British vampires. How did you survive the first hunt? I fled, Jonathan.
like most vampires who survived that slaughter. And I secretly came back when I was sure they had lost my trail. Why start a second one? Priwen has always seen us immortals as a threat to mankind. My guess is they suspect one or more of us is the cause of the epidemic. You should flee then. Leave London, the country even. I have seen the Guard in action. They are merciless. Your concern warms my heart, Jonathan. But fear not. If the situation gets too dangerous, I shall retreat to my secret Scottish manor. I could hide you in my luggage, if you wish. Thank you for the offer. I shall keep it in mind, but I have much to do here. There is a question I must ask you. Could Lord Redgrave be my maker? I doubt it. If Lord Redgrave had made you his progeny, he would not have seemed so surprised when you demonstrated the strength of your lineage. Will I ever discover the identity of my maker? Maybe not, Jonathan. We know for sure you were made by a powerful vampire, but most of those fled England long ago. Please forgive my bluntness, but I have to ask. Was it you? Did you make me? Oh, Jonathan. I know you shall always have a gnawing doubt about who made you an immortal. But I swear, I had nothing to do with it. You have no idea at all? You seem to know so many things about the secrets of the vampire underworld. Even if I had my suspicions, I would not dare give you a name so soon. All I can say is this. I will make inquiries and keep you informed. What is the plan? The plan is we both try to save this city, you and I. Go to Ascalon, accept their proposition, and use their influence to promote your agenda. How can I save London? The epidemic is the priority. You must find its origin and put an end to it. This is the best way to solve the crisis. What will you do? I still have contacts and old friends in this town. I shall make some inquiries and attempt to learn more of the situation. We need clarity. One day soon, I will have to find the answer to this mystery. And I shall help you in your research, I promise. For now, you must go to the Ascalon Club and play their game. Will I see you again at the Pembroke Hospital? No, you will find me here if you need me. I shall conduct inquiries alone, and we can then share our discoveries. Will you not visit Pembroke again? No. I must remain discreet and avoid attracting attention to Pembroke Hospital for the time being. But how will you sustain yourself? I shall not, Jonathan. Fear not. I'm used to it. When will we meet again? As soon as you meet Lord Redgrave, I suppose. Fear not, my dear. I shall only be a heart's beat away. I want to thank you for all your support and your help, my lady. Could you do me a last great favor and call me Elizabeth? I should be honored, my lady. Then it is settled. Finally, some good news in these dark hours. Thank you. I appreciate the advice. I had best prepare myself to meet this Lord Redgrave now. How thrilling to meet the Earl of Bristol in the flesh, so to speak. Something tells me you're not very keen on the man. Don't get me wrong. The gentlemen of the Ascalon Club are honorable, but their attitude and opinions are somewhat antiquated. I see. As long as they deny access to female applicants, I will leave them to their antediluvian considerations as to the natural order of things. Jonathan, promise me you'll be careful. Of course. But why the fear in your voice? Look at me, Jonathan. I am. I mean, really look at me, young Ekon. We may be deceptive by nature,
But this heart of mine has always told the truth. Elizabeth. Go, my friend. But come back to me soon. ओके गाइस, हमें एक क्लब ज्वाइन करना है, तो चलेंगे वहीं पे। So, time to visit the Ascalon Club. एस्कोलन क्लब जाना है, वहाँ पे विजिट करना है भाई, और ज्वाइन करना है। फिर उसके बाद उनके मिशन शायद हो सकता है हम करें। तो ये वेस्ट एंड में है, तो थोड़ा सा ही दूर है, इतना नहीं है, लेकिन हम भाग के पहुँच सकते हैं। चलो भाई चलते हैं। अब यहाँ पे डोर तो क्लोज है भाई, हम कैसे जाएंगे? It's locked, all right. भाई ये तो लॉक है, अब क्या करें? ओ भाई ये तो लॉक है, किस तरफ से जा सकते हैं हम? कहाँ से जाना है? Christ, he's dead! ओ भाई पीछे क्या चल रहा है? Fucking fast! Shit! You'll pay for that! वैम्पायर है कोई? वैम्पायर है भाई, अब लगता है इसको मारना पड़ेगा। इसके साथ लगता है हमारी फाइट होगी अभी। चलें नीचे फिर, क्या कहते हो? लो भाई, अब इसके साथ फाइट होगी। पीछे से चलते हैं हम इसके। ओले भाई ये लबर। अबे हमें तेरा ब्लड चाहिए। ओ भाई मारता है भाई, हमें भी ब्लड चाहिए भाई, हम भी भूखे हैं। आजा आजा आजा, ब्लड चाहिए ना, आजा, अभी हम तेरा पिएंगे। मारा। लूट लूट नहीं छोड़नी हमने, लूट करेंगे, लूट करके फिर हमने भागना है यहाँ से। चलो भाई, यहाँ से जाना है ना, यहाँ से फिर आगे लेफ्ट होना है, आगे सीधा आगे जाना है, फिर आगे ब्रिज आएगा, वहाँ से लेफ्ट होना है। यहाँ पे क्या है भाई? काफी सारी आवाजें आ रही हैं। अबे इधर तो बहुत सारे हैं भाई। हो भाई, तबाही तबाही, वैम्पायर ही वैम्पायर है भाई। कीप आउट। हाँ भी है कहीं पे एक। हाँ पे है भाई। That was the vampire I saw earlier. This war takes no prisoners. ओ चलो भाई, काफी सारे निशान लगे हैं। यहाँ से जाना है क्या? जाना किस तरफ से है गाइस? यहाँ से? हाँ जाना इधर से ही है। The West End. Never have I felt so sad to be back home. ओ तो ये यहाँ पे रहता था जोनाथन।
इसका घर है यहाँ पे। चलो भाई चलते हैं सीधा एस्कलोन क्लब चलते हैं। ओ भाई फाइट होने वाली है हमारी यहाँ पे। ओ भाई शॉटगन। ले ले भाई। हार जा भाई। हार जा। मारा। लूट उठाते हैं। लूट लूट। हम पहुंच चुके हैं भाई वैसे, या करीब है बिल्कुल। यहाँ से एंटर होना है। ये आ गया भाई वेस्टर्न। सीधा हमें जाना है एस्कलोन क्लब। The Ascalon Club, the heart of British vampire society. Not quite as subtle as I expected. ओह ये है भाई एस्कलोन क्लब, यहाँ पे हमें जाना है। चलो भाई इंटर करते हैं, देखते हैं क्या आता है। Do you know where you are standing right now? In front of the Ascalon Club, I presume. The Ascalon Club only summons or ostracizes. What is your business tonight? I received an invitation. I'm Dr. Jonathan Reed. Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. Reed. Please proceed. Lord Redgrave is waiting on you upstairs. ओह वेटिंग हो रही है भाई हमारे लिए। ओ भाई यहाँ पे क्या फाइट हुई है। यहाँ पे तो हर चीज टूटी फूटी पड़ी हुई है। There has been quite a battle here. हम तो लूट करेंगे पहले। I'm sure the Ascalon Club has the money to replace the furniture. इससे बात करें। Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. Reed. Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. Reed. ओ भाई इसके पास तो एक ही लाइन है बोलने के लिए। यहाँ पे हमने लूट की है। यहाँ पे क्या फाइट हुई है। कितने सारे बंदे पड़े हुए हैं यहाँ पे। ओहो हो। चलो भाई हम लूट करते हुए देखते हैं कहाँ कहाँ लूट पड़ी हुई है। लूट करेंगे फिर मिशन करेंगे क्योंकि ये हमारा डेली का हो गया। ओह यहाँ पे कुछ मिला टैगर कॉइंस। भाई लूट फर्स्ट है। ये डोर क्यों क्लोज है भाई। ये बंद होगा। I cannot enter. हाँ भाई पता था इसमें हम इंटर नहीं हो सकते। लगता है दूसरी साइड जाना है हमें। पहले लूट होगी भाई, सबसे पहले लूट होगी। ये म्यूजियम टाइप भी है वैसे, ऐसा लग रहा है। पहले हम यहाँ पे लूट मचाते हैं, फिर हम देखेंगे हमें कहाँ जाना है। चलो भाई लूट वगैरह करने से ना हमें बुलेट्स वगैरह मिल जाती हैं। स्टार्टिंग में हमें पता भी नहीं था बुलेट्स कहाँ से मिलेंगी। ओ भाई लूट ही लूट। चलो भाई क्या है, इस तरफ या पीछे? लूट ही लूट है भाई। हाँ हाँ देखते हैं हमें कहाँ पे जाना है। यहाँ पे Good evening. We repel the intruders for now. My good friends, if I may have your attention. Behold our visitor, the good Dr. Reed. Newborn of blood so pure and strong that even my friend Fergal Bansha was no match for him. Here, here, here. Come forward, young Ekon, for we have so much to discuss. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reed. I am Lord Redgrave,
Earl of Bristol and chairman of this exclusive association. Lord Redgrave. At last we meet. I've been eager to make your acquaintance. I've heard some astounding things about you. Please accept my condolences for your loss, Dr. Reed. Thank you, my lord. Lady Ashbury expressed your wish to meet me. Yes. The lady has always been a useful acquaintance, though not always reliable. Is she a good friend of yours? She's a close friend, and I'm honored that she feels the same about me. The centuries have taught me never to trust a woman completely, especially if she is immortal. Too prone to emotions, if you ask me. Too fickle when it comes to important decisions. My lord, do not expect me to speak ill of Lady Ashbury. Of course not, and I praise your loyalty. Would you offer the same fidelity to the Empire? What do you mean? I speak of the Skull Plague that threatens London and the country. You have been on the front line in the East End, but the time has come to open up a second front here. The epidemic has escaped the quarantine. You have new cases of the outbreak. We don't know for certain, but we cannot allow the disease to threaten the prominent heads of Great Britain. Why are you suddenly so friendly? The last time I met one of yours, he tried to kill me. Are you referring to Fergal? He was the most useful of servants, but he was just a servant. You, on the other hand, Doctor, proved yourself much more worthy. You want me to find possible sources of the outbreak in the West End? Is that it? Ah, straight to the point, like all eager newborns. We shall have time to talk about all this, Dr. Reed, but first, I should like to get to know you better. Talk? Is that the only reason you asked me here? Well, no. I also wanted to meet the intriguing Ekon, who made such a powerful progeny of his sister. You have not learned the name of your maker, am I correct? No, I haven't. Have no embarrassment, Dr. Reed. We all make mistakes. But whatever your lineage, you are definitely Ascalon material. What do you mean? I would like you to become a member of the Ascalon Club, and to serve me as such. Before I accept, I have so many questions. Please ask. What does it mean to be a member of the Ascalon Club? It means that you swear to protect the interests of the Crown, that you become a loyal servant of the British Empire. Do you have any official recognition from the government? A charter from His Majesty the King? No. Of course, the Ascalon Club publicly supports the Empire, but the true nature of its members remains a secret. Am I supposed to follow orders? As founder and chairman of the club, I alone am entitled to make demands of our members, and I do appreciate obedience. I killed Fergal, who claimed to be one of yours, sent to cleanse the East End of all Skulls. Will his death be an issue? Do not worry. My priorities have changed. Fergal was a zealous servant of mine, but like any servant, he had his limitations and is readily replaced if necessary. What is the Ascalon Club's express purpose? We follow the credo of William Marshall, the greatest knight who ever lived. As was he, we are sworn to protect the British Empire. William Marshall founded the Ascalon Club. Not exactly. William Marshall granted me immortality, and I founded the club a few years later. The good knight has been gone for so long. What does Ascalon mean? Ascalon was the lance wielded by St. George, glorious patron saint of England when he slew the dragon. And like that lance, we pierce the hearts of all our nation's enemies. I agree to join the club. This is good news. Good news indeed in these crucial times. Let's inform the Assembly formally and proceed with your initiation. My initiation? Fear not.
Nothing fancy nor dangerous. It is just that we, the members of Ascalon, believe that tradition and custom are the backbone of this country. My fellow members, dear friends, please gather and welcome this Ekon as one of our own. Is he worthy? Is his blood pure? Well, speak, Dr. Reed, in front of the most sacred blood. The blood of our beloved William Marshall, speak now. Will you serve and protect the crown as he did? Yes, I will. Then, young Ekon, it is time to testify with your blood. It is time to sign the Book of Allegiance. I know it's awfully gothic and a tad pedantic, but England's traditions are the backbone of our nation. Delightful. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reed. Take your place among the bearers of the lance. One of us! One of us! ओके भाई, बात करते हैं इससे. That went well, did it not? It is always useful to bolster the troops' morale, especially before a difficult battle. You have the makings of a general, my lord. I was, though very long ago. Well, not quite a general, but a proud defender of the crown. So why did you really want to meet me? Straight to the point again, young Ekon. All right, let's talk, you and I, Lance Bearer. I'm listening, my lord. According to my spies, you have worked with Dr. Edgar Swansea on the epidemic, and your findings were quite alarming. Do you know Edgar Swansea? Not personally, but I've been told he has some sort of immortal fetish and is a good friend of yours. Does it bother you that I consider him my good friend? As long as you reveal nothing of the club's inner workings, why should I forbid you engaging in conversation with the good Dr. Swansea? You were spying on me. Not personally. I rarely leave this building. But once he found you, Fergal kept me informed. Until you put an end to his mission. You do know I killed him. Yes. Will you bear ill will towards me for his death? Of course not. Your victory was quite impressive and courageous. You earned my respect. Who was Fergal? I don't see him sipping tea with the others in the club. Fergal Banshire was my squire of sorts. Even before becoming that magnificent beast, he was a brute. He served me well for decades. No, I mean, what was he? He was clearly no ordinary vampire. No, he was a Volcod, all muscles and instinct. Quite the rare breed, ferociously territorial. Mortals often mistake them for werewolves. Yes, I'm convinced the recent invasion of frenzied Skulls in London is directly linked to the epidemic. This is not the Spanish flu, but something else. I would be glad to hear more of your discoveries, Dr. Reed, but for now, my main concern is the security of London's inhabitants, both mortal and immortal. What do you mean? Alarmed by the epidemic, the Guard of Priwen has started a war against us British vampires. To appease the situation, we must eradicate the Skulls. I have met peaceful and wise Skulls.
To exterminate them means we are no better than vampire hunters. Skulls are hideous, shameful creatures that give all Ekon a bad name. So, what do you want me to do? I want you to investigate the city thoroughly. I have reason to fear there are cases of contagion in this part of town. Our absolute priority is to find and cleanse them. And how would you like me to proceed? By all means necessary, Dr. Reed. You are now a member of the Ascalon Club, and you have carte blanche. Interrogate the locals, follow all the leads you find, and get results. Have you heard of सही है भाई। तो हमें इस सिटी में होने वाली जो भी मर्डर्स हैं उनके पीछा करना है, उनका मतलब फॉलो करना है कि कौन कर रहा है। किससे बात कर सकते हैं हम? यहाँ पे एक बाबा बैठा हुआ है, इनसे बात करते हैं। We are losing this Good fight. evening, Dr. Reed. How does it feel to be this evening's centerpiece? Figuratively. I feel perfectly fine. Do I have cause for concern? Do not be alarmed. The Ascalon Club has a tried and tested policy for choosing its initiates. May I ask who you are, sir? Why would you be interested? Well, as you seem to be the only man in the room with a beating heart, you draw quite a bit of attention yourself. Ah, vampire senses never cease to fascinate me. They dwarf those of mere mortals. I am Aloysius Dawson, by the way. Are you a member of the club? Yes, I am. And I have been for many years. And will be until the day I die. Are you sick? Personally, I consider my advancing years are a sickness in itself. My body is slowly abandoning me, Dr. Reed. Mr. Dawson, of Dawson and Dawson, the wealthiest man in England. It is a pleasure to meet such a prominent figure of London. A withering London figurehead, to be precise. Are you sick, Mr. Dawson? I am a doctor, you know. My case is beyond the scope of traditional medicine. I have spent fortunes on the world's most competent doctors to arrive at that diagnostic conclusion. I'm sorry to hear that, sir. Should I suppose that you're here in search of some form of immortality? Absolutely not. I'm here to implement my plan to save the city I was born in. To cast out the ghastly evil that has us all on our knees. What do you know about the Guard of Priwen? I should not say this, but I admire their commitment. This is what the nation needs right now. Would you help them? No. There is a time for such methods. But brute force will not be enough to fight this plague. We have to think differently. But they are our enemies. They are not mine, Dr. Reed. Money cannot solve every problem. This mysterious epidemic is going to require more than money can buy. You're right. Money is nothing unless one has the will to wield it. I have a plan, sir. A radical one that will save all that is essential in London. What is your plan, then? Quarantine and barricades are futile. What we need is a wall. A formidable, unscalable wall to isolate the deserving from the infected masses. But that would segregate the rich from the poor, would it not? It would be unjust. Our only course of action must be to save England. And to save England, we have to make sacrifices. Are you not mistaking sacrifice for summary execution? Why do you care? Are you not a vampire? Removed from all mortal concerns? Decisiveness is what the city needs. And it needs it now. तो हम ऐसे बंदों से मिल रहे हैं भाई। ये बूढ़ा है भाई, पता नहीं ये दौलतमंद था, बहुत पैसे वाला था। अभी वैसे जहाँ हमें जाना है, जाके मतलब इस सिटी में बातें वगैरह करनी है लोगों से,
और जहाँ भी कोई मर्डर वगैरह हुआ है तो उसकी ट्रेल को फॉलो करना है, फॉलो करके पता लगाना है कि ये कौन कर रहा है। तो भाई ये मिशन है अभी हमारा। चलते हैं बाहर और देखते हैं कि बाहर क्या हो रहा है, इस सिटी में क्या हो रहा है। इस सिटी में जाके हमें बचाना है भाई, मारना है, पता करना है, ठीक है, बहुत कुछ करना है। तो ये वैसे जोनाथन की अपनी सिटी है, इसका यहाँ पे अपना घर था और यहाँ पे सारे मतलब के रिच लोग रहते हैं, ठीक है। और ये जो भी एस्कलोन क्लब है बहुत ही पुराना है। जोनाथन को भी ये पता चल चुका है कि भाई इसको किसी बहुत पुराने एंशियंट वैम्पायर ने इसको बाइट किया था, जिसकी वजह से ये वैम्पायर बना था, क्योंकि इसके खुद के बाइट से जो सिस्टर इसकी बनी है, इस वजह से एस्कलोन वालों ने इसको बुलाया था कि भाई इसको बुलाते हैं क्योंकि ये बहुत पावरफुल है। अब ये हमारा क्या यूज़ करेंगे, किस लिए इन्होंने हमें इनवाइट किया और ये हमसे अभी टेस्ट ले रहे होंगे, शायद कुछ ऐसे सीन होने वाला है। चलते हैं देखते हैं कि अभी वेस्ट एंड में हम क्या क्या करते हैं। पहले चल के इस लड़की से बात करते हैं। Redgrave just suggested I was sired by an ancient vampire. चलो भाई चलते हैं, इससे बात करते हैं, देखते हैं ये क्या कहती है। Good evening, miss. Oh my god, no. Please, Mr. Vampire, don't kill me. Please, no. I'm too young to die. ये I कैसे still जानती have है ओए? so much to offer this world. Wait, no. Why do you think I would... What? Don't worry, Dr. Reed. I know you wouldn't harm me. Mother told me you were in this part of town and might drop by. Your mother? My name is Charlotte, sir. Charlotte Ashbury. My mother taught me long ago how to recognize the signs that betray a vampire. I understand she also taught you how to tease and gently mock innocent young Ekons. It's a pleasure to meet you, Miss Charlotte. इससे क्वेश्चन करते हैं। बैक। Tell me about your adoption. What do you want to know? ओ ये अडॉप्ट हुई थी। How did you meet Lady Ashbury? First, I was an orphan in the institution for girls she manages in the West End. When I was 10, she adopted me, and I have lived with her ever since. Did you know she was a vampire when she picked you? The correct word is Ekon, Doctor. And no, I had no idea why my mother only showed up at night. She told me everything when I turned 16, though I suspected the truth for a long time before that. Who are your real parents? Elizabeth Ashbury is my real mother. She raised me and has taken care of me all my life. I have no idea who my progenitors are or were. Do you live with her? I still spend a lot of time in my mother's mansion, but I have my own house now. I have a life to live, you see. And one day, I'll have my death to face. चलो भाई बैक, और भी क्वेश्चन है काफी सारे। I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual recently? A few days ago, I spotted a strange house while campaigning for women's suffrage. Awful smell. No answer when I knocked. Where is it? It's the Mullaneys, a nice family who live in a big house near the park in the eastern part of this neighborhood. Goodbye, Charlotte. Oh, हमें Give वहाँ my जाना है। best regards to your mother when you see her. She's been quite busy these last few nights. I suspect you may see her before me. जाएंगे हम, अभी पता करेंगे भाई वो जिस घर के बारे में ये बता रही है वहाँ पे क्या हुआ है, ताकि हम फिर और यहाँ पे बात करते हैं। ये कौन है? Have you noticed anything suspicious recently? Good evening, sir. May I have your attention, please? Come on, Johnny. Don't you recognize your oldest friend? Clarence. Clarence Crossley. How are you? My God. So you survived the war too. So sorry I didn't recognize you at first. I almost didn't recognize you either. War does that to men, I heard. In my case, it was true, for I witnessed the horror that lies underneath. क्या पूछें और इससे? I'm investigating the source of the epidemic in this district. Can you help me? Infection is everywhere these days.
But if you ever go to the park near that swanky house belonging to the Mullaneys... Yes? What about the Mullaneys? What about their house? Not enough noise for a big family with children. Not enough movement. Closed doors. What is going on in there? I wonder. ये भी उसी घर के बारे में बता रहा है भाई, इसके बारे में उस पीछे How is your wife, Venus? लड़की ने बताया था. Spent so much time away from each other, and so many things have happened. But you're alive. You returned in one piece, and you have a family. How many soldiers can say the same? Believe me, it's not quite that simple. Unlike you, I'm not the man I used to be. Is everything all right at home? Surely Venus was relieved to see you return from France in one piece. Have you forgot what people are like in this part of town, Johnny? Venus fears for our family reputation. Now her husband has become the village idiot. Back. When did you escape the war and return to London? You know what's funny? I almost never think about the war. Not anymore. I'm involved in another kind of battle now. What is this new battle? I saw terrible things during the war. Horrors I thought I'd forget. They're here too. They're everywhere. Vampires. You need Goodbye. some rest, Clarence. You should try to sleep. चलो भाई मूव करते हैं. इसने भी उसी घर के बारे में बताया है, ठीक है, जिसके बारे में वो मिस शॉर्टली ने बताया था, वो जो अडॉप्टेड लड़की है. तो वहीं पे चलते हैं. वहीं पे हमें वहीं से स्टार्टिंग होनी है हमारी. वो घर वाले भाई दरवाजे बंद करके ठीक है बैठे हुए हैं. कहाँ कहाँ से घूम के जाना पड़ेगा. एक दो लोकेशंस हैं भाई. यहाँ पे ना ढूंढ लोकेशन पे जाने का बड़ा मसला होता है. बड़ा घूम फिर के जाना पड़ता है सिटी में से. चलो भाई कहाँ से जाएं? कभी आगे कभी पीछे. यहाँ से जाते हैं. Why are vampire hunters sniffing around here? I need to find out what they're after. ये ले भाई, ये ले भाई, ये ले भाई. Remember your vows, friend! ये ले. Have no fear, brother! ये लो भाई सुपर पावर जमा. Shall prevail! Go on! भाई ये ले मार भाई. हर जगह ये हैं भाई. चलो चलते हैं. आगे भी एक है. क्या करे कैसे जाए. फिर से फाइट होगी. जाना हमें किस तरफ है? हमें तो इस तरफ जाना है. अभी सुपर पावर का इस्तेमाल करके हम भाग जाएंगे. भाई ये ठीक है. इनविजिबल होके ना भाग जा. चलो भाई भागते हुए हम आगे. वो लगता है यहाँ पे जाना है. ये रहा वो हाउस. शायद इसी को सर्च करना है हमें. चलो भाई सुपर पावर का इस्तेमाल करके हम आ गए अंदर. ओहो हो लूट ही लूट भाई. इस घर को तो हम पूरा लूटेंगे. ये गया भाई लूट. ये भी उठाते हैं भाई. ओह This woman's body has multiple lacerations. They're deep, too. Whoever did this was driven by rage. भाई गुस्से से किसी ने किया है ये सारा. तो भाई किसको इतना गुस्सा था कि इसको मारा इतना बेदर्दी से. और ब्लड ट्रेल भी है वैसे. सारा कुछ लूट करके ही जाएंगे हम. तो ये भाई ब्लड ट्रेल जा रही है कहीं नीचे की तरफ.
आखिरकार ये किसने किया, यही पता लगाना है। और इसके पीछे कौन है? ओ यहाँ पे क्या हुआ है? शूट करेंगे यहाँ पे वैसे ये He भी had है। his tongue removed and his eyes gouged out. He was a victim of brutal torture. किसी ने इसकी आंखें और जुबान काट लिया भाई, निकाल ली है। क्या ही बेदर्दी से मारा इसको भाई। ओहो ओहो, अरे कॉइंस। चलो भाई यहाँ से चलते हैं, फॉलो करते करते ब्लड को। रूम में क्या है? एक पोस्टर लगा हुआ है। और क्या है यहाँ पे? लूट ही लूट। नजर आएगा नहीं? चलो भाई नीचे चलते हैं। This one's neck is broken. He was young. Probably the son. बेटा होगा भाई, इसको भी गर्दन तोड़ के मार दिया किसी ने। ये रहा ब्लड। और लूट करते हैं पहले। तो बंद है, जाना इस तरफ है, देखते हैं क्या होगा यहाँ पे। ये सामने कोई है, एक और बॉडी पड़ी हुई है यहाँ पे। ओ भैंस की तुम। You thought I was dead too, didn't you? No, I was just pretending. Doris told me I could have been a great actress. You killed your family. They mocked my talent. ओ भाई, इसने अपनी फैमिली को मार दिया। ओ भाई, ओ गंदी यार, ये तो उल्टी मार रही है। मारो भाई इसे, मारो भाई। ब्लड दे अपन। ये ले भाई। हाँ जल्दी आ। ओ भाई ओए, उल्टी करती। ओए अबे गंदी, अपना घर गंदा कर रही है गुड़िया कहीं की। ये तो गई। हाँ क्या हाँ कर रही है, जल्दी आ। अबे गंदी। हेल्थ वापस करते हैं थोड़ी ऊपर, फिर इसको मारते हैं। आजा आजा, हेल्थ पूरी है मेरी। ओ नहीं, ये गंदी उल्टी ना कर रहे। ये ले। यार ये क्या उल्टी करती है। अबे हेल्थ तुम्हारी काम हो रही है, ब्लड दे। वापस हेल्थ आई। ये ले ये ले। I've never seen such a radical mutation. Could it be a new stage in the disease's evolution?
भाई ये तो कोई नया ही क्रीचर था भाई। भाई ये देखो फट गई है पूरी। देखते हैं यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है। लेटर फ्रॉम दी टीचर एक्टिंग स्कूल। तो ये किसी स्कूल में गई थी जहाँ से भाई इसको वैम्पायर बना दिया गया शायद, जहाँ तक मेरा ख्याल। और फिर वापस आके इसने पूरे घर को मार This दिया। girl took lessons at the famous Doris Fletcher acting school. वहाँ पे ये लेसन लेती थी तो वहीं से भाई ये फिर तो बन के आई होगी वैम्पायर। और कुछ पड़ा हुआ है क्या कोई काम का हमारे लिए क्या? नहीं कुछ। क्या सांस चढ़ी हुई थी हमारे बंदे को भाई, ब्लड पड़ा हो तो कोई टेंशन नहीं है भाई। हाँ क्या ही लूट पड़ी है। चले बाहर की तरफ, कभी भी लूट होगी यहाँ। यहाँ से तो हम आए थे, अब हमें जाना है इस सेंटर वाली लोकेशन में। लेकिन ये रेड एरिया है तो बहुत खतरा भी हो सकता है यार यहाँ पे। जो भी होगा देखा जाएगा भाई। हम वैम्पायर हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। निकलते हैं बाहर की तरफ और चलते हैं। हेलो भाई, सुनसान गलियां रोड्स। चलो भाई हमें इस तरफ भागना है क्योंकि पीछे की तरफ है। हमें अब जाना है भाई इस स्कूल में। Please, sir. I can't let you through. ओह नहीं जाने दोगे? Please. जाने दे जाने दे जाने दे जाने दे भाई, भागो। इनसे बचना था यार, इनसे फाइट नहीं लेनी थी। कहाँ पे है ये स्कूल जहाँ पे ये भाई पढ़ती थी, लेक्चर लेती थी एक्टिंग के? अभी तक कोई भी वैम्पायर हमारे आसपास नहीं है, अच्छी बात है। एक चलते हैं भाई यहाँ से। कितना दूर है? लगता है हम पहुँचने वाले हैं बस। कौन सी साइड पे है ये? किधर हम आ गए? Good evening, old chap. Are you all right? I won't. You need some चलो भाई, मैंने समझा कोई बात होगी लेकिन नहीं। चलते हैं कहीं और से बात करते हैं या मैन मिशन की तरफ चलते हैं। चलो भाई, यहाँ पे ये बंदा है, इससे बात करते हैं। शायद हमें इसका ब्लड वगैरह मिल जाए। देखते हैं क्या बात होती है। Good evening, sir. Please forgive me for disturbing you. I'm a doctor. I never judge a man by his title, but by his attitude. And you are not disturbing me at all. I am Calhoun Russell, and I welcome you. Well, I must admit it's good to receive a warm welcome for once. I'm Jonathan Reed. Welcome, Dr. Reed. Welcome to my humble shop. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual? Not really. Wait, now that you mention it, I don't see the McPhersons in my favorite restaurants. They love delicate meals too, you understand. Thank you. It may be nothing, but I'll investigate anyway. Where do they live? They have a house in the southern part of the district, somewhere north of the railway bridge. There is a courtyard, if I remember rightly. Do you have any family nearby? Not since my parents died. I'm London's lone gourmet. Really? But you seem to be such a pleasant and sociable fellow. I'm afraid the real hedonist has to be sometimes. I discovered ecstasy as a solitary pleasure, but it does not mean it can't ever be shared. London's lone gourmet.
What a strange title. I used that name in my early years when I was a food critic, and I kept it. Back. I may have a look at your goods, Mr. Russell. चलो भाई, इसके पास देखते हैं क्या क्या पड़ा हुआ है, क्या क्या हम बाय करें। काफी कुछ है जो हम सेल कर सकते हैं यहाँ पे। चलो भाई निकले यहाँ से, और तब जाना था हमें जाना था भाई सीधा आगे से लेफ्ट पे आएगा ये, वो स्कूल में जाना है हमें। ओ भाई It's locked. ये तो लॉक है। रास्ता लेना पड़ेगा। पूरा घूम के जाना पड़ेगा। यहाँ से ओ भाई फिर से उल्टी वाली मासी आ गई है भाई, फिर से उल्टी करेगी। ओ भाई इसको भी मारना पड़ेगा भाई। ये भी एक बहुत बड़ा वैम्पायर है, ये भी वैम्पायर की एक भाई अबे बचो भाई। सुपर पावर का यूज करते हुए ओ भाई आधी आग हमने सीखा दी। ओ भाई ये ले भाई, ये ले। भाई आखिरी ये ले भाई, मार गया। चलो भाई, इसने कोई इतनी खास लूट नहीं दी। क्वारंटीन का एक लगा हुआ है। यहाँ से जाना है क्या हमें अंदर? देखते हैं हम कहाँ पे जाने वाले। वो लूट पड़ी हुई है यहाँ पे भी। काफी सारी चीजें नजर आ रही हैं, ये भी उठाते हैं। चलते हैं बाहर की तरफ। ओ भाई लगता है नीचे फाइट होने वाली है। रेडी हो जाओ भाई, रेडी हो जाओ। ओ देखो भाई सामने इनसे फाइट होगी भाई। ये चेक कितने अबे कितने यहाँ पे। ब्लड दे दे मासी अपना, चल मार जा। ओ ये भी है वो,
भाई ये तो फास्ट वही है यार जो दूसरी लाइव स्ट्रीम में हमने जिसको मारा था। मर गया। भाई अब तू नहीं हमें मार सकता। टूट उठाते हैं। जाना कहाँ पे था हमें? एक जो है वो उधर ही है कहीं दूर। वो दूर है, बहुत सारे हैं उधर। क्या आवाज़ें डाली हैं यार। चलो यहाँ से लगता है अंदर जाना है, चलते हैं। और भी कुछ है देखने को? यार नीचे क्या है? ओ गेट है, इसको ओपन कर देते हैं जहाँ से मतलब हमारा अनलॉक्ड कर दिया हमने। अब हम यहाँ से भी आ जा सकते हैं। अब चलते हैं अंदर, देखते हैं यहाँ पे क्या है। भाई ये स्कूल है, एक्टिंग स्कूल। क्या कॉइंस मिले हमें? ये क्या है? ओ भाई शॉटगन मिली हमें। चलो भाई ये एक अच्छी चीज़ मिल गई यहाँ पे लूट करने से। अभी चलेंगे। ओ लूट लूट। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? लड़ाई हो रही है। ओ इसने पूरी फैमिली को इन्फेक्ट कर दी। ओ भाई दो से फाइट। ओ भाई दो से फाइट। पहले एक को मारते हैं। ये जल्दी मत। अबे ये बुढ़िया की हेल्थ काफी ज्यादा है और ओहो ये तो क्या, ये तो मरेगा। ये तो मरेगा, ये तो मरेगा मेरे हाथ। ये ले, ये जल्दी मरेगा। दूसरी लेट मरेगी बुढ़िया, उल्टी वाली बुढ़िया। ये मर गया देखा। अब ये वो टाइम लेगी। दया होगी पावर भाई। ये ले। क्या? अबे बुढ़िया तूने अपने हस्बैंड को भी नहीं छोड़ा, हमें तू ऐसे क्या छोड़ी? उल्टी वाली चाची, हट जा, हट जा मासी। ओहो हो, हाँ हो। आवाजें देखो इनकी। ये ले, अब निकाल आवाज, अब निकाल आवाज। ये ले। अबे मार दिया, तेरा ब्लड निकालूं मैं। ये ले। ये ले, ये ले। तू हमें मारेगी, हमें मारेगी। चल। ओए होए होए होए, जाते जाते हमें समझ देगी। ओए फट गई ये। जीव से क्रिएचर है यार, लेकिन फाइट बहुत मजे की हुई है। लूट करते हैं फिर इन्वेस्टिगेट करेंगे। ये शायद वो फैमिली है, शायद दो फैमिलियों के बारे में बताया गया था यार। ये तो हम किसी के घर पे आए। अब वो स्कूल पे जाना है शायद। नॉन लेटर, लव लेटर पर यार क्या पढ़ रहा हूँ। So the husband had an affair with Doris Fletcher. डोरिस फ्लेचर के साथ भाई अफेयर था। अब ये डोरिस फ्लेचर कौन है? लूट का बॉक्स पड़ा हुआ है। हमें यहाँ से बाहर निकल के आगे जाना है यहाँ पे। चलो भाई, यहाँ पे और तो नहीं कुछ पड़ा हुआ हमारे काम का जो हम अभी तक नहीं उठाए। चलो चलते हैं सुपर पावर का यूज करते हुए। Doris Fletcher seems to be the missing link here. It can't just be a coincidence.
ये I should बात go to her acting school. एक्टिंग स्कूल पे अब जाएंगे भाई। चलो भाई चलते हैं, हम एक्टिंग स्कूल चलते हैं, आज एक्टिंग सीखेंगे वैम्पायर होके। यहाँ से आगे से कहाँ से रास्ता है? पहले मार कर लेते हैं, या तो मार कर ही लेते हैं वैसे। एक मार्क यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक हो गया जी। चलो चलो गाइस, No civilians allowed, sir. चुप करो यार, जाने दो हमें सुकून से। यहाँ अब आगे से, यहाँ से राइट होना है, सीधा सीधा आगे, यहाँ से आगे फिर लेफ्ट। बहुत बड़ा थिएटर है मैप के ऊपर तो। There's an open window on the second floor. Oh. I should be able to get in through that. विंडो से जा सकते हैं भाई थिएटर के अंदर, जहाँ से। चलो भाई चलते। डोरिस फ्लेचर्स एक्टिंग स्कूल। तो डोरिस फ्लेचर के भाई स्कूल में आ गए। यहीं से ये सारे वैम्पायर बने थे, मियाँ बीवी और वो पीछे पूरी फैमिली जिसको मार दिया लगता है वो यहीं से वैम्पायर बन के गए हैं। तो सारे एक दूसरे से लिंक थे। Woe to you, nations of hypocrites. ओए होए होए। For in front of you stands the tall queen. या तो ये वैम्पायर होगी, Can that be Doris या तो फिर Fletcher's हम इससे voice? बात वगैरह करेंगे। नहीं वैम्पायर ही होगी, इसने सारों को वैम्पायर बनाया है। ओ भाई यहाँ पे कौन है? बिल्कुल पास ही हम। वेपन वगैरह कोई रख ही लेते हैं। ओहो हो, शॉट गन हमारे हाथ लग गई है। क्या रखें? कुछ नया वेपन रखते हैं। चलो भाई। ओए मासी जी क्या हाल है? मासी जी क्या शॉटगन में काम होगी? ओए यार ये जो फटती है ना भाई, ये नहीं है सही। ये वैसे मैंने एमओ ज़ाया कर दिया, एक शूट मिल गई हमें यहाँ पे। चलो भाई चलते हैं। Alas, poor Doris. I knew her well. And many can testify to her kindness and beauty. For now she hides in shadow, ugly as sin. ये तो But पूरा when you वैम्पायर लग burn रही। and die, कोई पड़ी हुई है बुलेट्स वगैरह नहीं है? दे दो यार, चेक कर गेम वालों। यहाँ पे काफी सारी लूट है। यहाँ से नीचे जा सकते हैं, पहले यहाँ से लूट तो पकड़ लें फिर जाते हैं नीचे। चलो गाइस अब यहाँ से सीधा नीचे। भाई लगता है बहुत बड़ी फाइट होने वाली है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है मुझे। यहाँ से तो रास्ता ही बंद है। चलो भाई, ब्लड भी फुल, हर चीज फुल। लो भाई हम आ गए। woe unto thee, son ओए of हो, Babylon! ओ भाई यार भाई, अबे क्या है ये? I smell your fear. इसके On guard. भाई इसने एक हाथ पे मतलब पूरा कपड़ा डाल के रखा हो। Touché, sir. ओ भाई, ओहो, ओह। Behold, Kinslayer, the disgrace of Shield. She was once renowned. Will she be the queen again once they all share her fate? हम भी पावर यूज करेंगे।
ओ भाई तो हाथ चेक करो। चल भाई। ओए होए 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 होए, इसका हाथ है या क्या है? थोड़ा है भाई। I summon thee, my children of the night. You killed my father. Prepare to die. Oh, oh, oh. Oh, 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 भाई। Arise and say, come to me, my servant. Avenge me. ओ भाई नहीं यार। Your भाई। blood will be mine. ये हाल तो आधी रह गया मगर। ओ भाई स्कैन करना पड़ेगा, और लेना पड़ेगा भाई। क्या ले यहाँ पे? ओहो ओ भाई। ओए नहीं यार। My children, my beloved, die for the love of me. ये लो। Son of Babylon. ये ले, ये ले, ये ले। हा 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 हा। ओए। Wait. I beg you, wait. What? I don't want to die. And I did not come to kill you, Miss Fletcher. Will you spare me then? Save this cadaverous carcass of mine. Does your heart beat a little faster now? You fancy me then, Doctor? No, Miss Fletcher. My dead heart will beat for only one. Ah! Is she pretty? Is she sweet and tender? To me, yes. Ah! I hate her already. I know. And this is partly why you must be destroyed. But you just said... That I did not come here to kill you, yes. But I realize now the threat you embody must be stopped. Will I be remembered? Will you? You were Doris Fletcher, the greatest actress of her generation. No one can take that from you. Thank you. And farewell. Ah! 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 Farewell, Doris. Bravo! So dramatic. I love it. McCullum. How strange I seem to find you whenever I'm inquiring about that Skal infestation. I mean you no harm. I'm not here for you. But once I put all the pieces of the puzzle together, I'm sure we'll have a little chat, you and me. Stay away from me, McCullum. You and all your war dogs. That I can't guarantee, Dr. Reed. But I'll let you go. For now.
भागना पड़ेगा भाई, ये कहाँ से आ गया? इसने सारी हमारी I फाइट should देख probably ली। leave the theater right now. भागना पड़ेगा, अब जाके बताना पड़ेगा अपने The उस West End should be safe now. But London is not. ये It would बात be wise to benefit from the Ascalon's protection while I continue my research during the Great Hunt. ओ भाई चलो भाई, जाके अभी हम उसी क्लब में जाते हैं और बताते हैं कि भाई इस सब के पीछे ये थी। These people want me dead. I need to leave now. पता है भाई, वो मारना चाहते हैं, उसको पता चल गया कि हम भी एक वैम्पायर हैं। अभी सीधा जाना है भाई क्लब में। So Doris just Chapter needed to be 5. close to her audience to infect them. Second Contagion through opinion. skin. Very disturbing. कहाँ से जाना है, किस तरफ से जाना है, कुछ समझ नहीं लग रही। चलते हैं वापिस, जाके बताते हैं क्लब में भाई ये सब थी इसके पीछे। वेस्ट एंड में हम वापिस सीधा क्लब में जाना। All countries unite. Women चलो भाई अंदर चले। एस्कलोन क्लब आ गए हम वापिस। तुम क्या कहते हो भाई? Welcome back, Dr. Reed. बस इसके पास एक ही जुमला है कहने को। बात करते हैं। Elizabeth, what are you doing here? I've been formally asked to witness your triumph, my dear. After all, isn't it the natural role of a woman to support her man in victory? But it's you who insisted I join the Ascalon. Please forgive my giddiness. I'm just overcome by the thrill of finally being allowed within these hallowed halls. You certainly have an inquisitive mind. It's quite something. Elizabeth Ashbury, only you can make me smile in these difficult times. And the same to you, Jonathan Reed. Now go have your little chat with the chairman. I can see he's practically bursting to hear your report. चलते हैं भाई, क्या हो गया बताते हैं उसको। चलो भाई, चलो चले और बताएं उसको कि भाई सबके पीछे कौन थी। Welcome back to the Ascalon Club, Lance-Bearer. Please, tell us the good news. Have you put an end to the epidemic? My hypothesis was correct. Doris Fletcher was the source of the contagion in this part of town. She was probably the first to be infected. And you cleansed her before the hunters, I've been told. Well done, Dr. Reed. You thrust your lance and pierced the very heart of the corruption. I'm just a doctor. The important thing is, we won a major battle for the survival of London. For that, we salute you. Thank you, my lord. Now, I have another task for you. One of the utmost importance. Perhaps even more so than the previous. I'm listening. It's time for you to perform a most sacred duty for the club. I want you to recruit a new vampire. Recruit a new vampire? Are you sending me on some sort of diplomatic mission? Not exactly. I want you to make Aloysius Dawson the Ekon he deserves to be. I'm not sure I'm the best candidate for such a task. I can hear the hesitation in your voice, Dr. Reed. I admire a man of principles. But in this matter, there is more at stake than your moral comfort. It's not a moral question, Lord Redgrave. It's the responsibility of giving immortality to a man I barely know. Nonsense. Aloysius has been a member of the Ascalon for years. This is but the fruition of a long-held plan. How would you like me to proceed? Aloysius is waiting for you at the Dawson estate. Once the deed is done, I'll join you there to celebrate this momentous occasion. Before I go, I have a few questions. All right, I'm listening. You invited Lady Ashbury.
Wouldn't that be breaking one of your cardinal rules? No women allowed. Not allowed as members, no. But considering the circumstances, I thought you'd like to have her here to witness your triumph. So it's a temporary admittance, then? Something of a bargain, considering the crisis we're currently facing. Why Aloysius Dawson? Because he is about to die. And he just may be the most influential man in England. After me, of course. Did he choose me? No, I did. My decision is very recent, to say the least, but it is entirely mine. Does he know I'm coming? He can't wait to become your progeny, Dr. Reed. Especially now that you have shown how strong your lineage is through your sister. How would you like me to proceed? Don't worry. Aloysius has had many years to prepare himself. He has studied our kind for decades. So shall I just let him drink my blood? Yes. Aloysius will gratefully sup on your blood. His heart will slow, then stop. But he will rise again as one of us, an immortal. Is there any danger? Our blood alters a mortal body so deeply that some don't survive the metamorphosis. They die for good. But Mr. Dawson has been preparing himself for a long time. Goodbye, Lord Redgrave. चलो भाई चलते हैं। और अब जो नया मिशन इसने दिया है, किसी को हमने वैम्पायर बनाना है, शायद वही बूढ़ा है जिसको हमने बनाना है, जिससे हम मिले थे। तो चलते हैं, अब यहाँ पे बात होगी हमारी। Are you all right, Jonathan? Lord Redgrave has just ordered me to turn Aloysius Dawson, to make him my progeny. I see. And how do you feel about this? I'd like your advice on the matter. The real question here is, why has his lordship given you this task? Do you think it's some sort of trap? Do you really want to know what I think about this? I do, yes. To make an immortal of a soulless blackguard like Aloysius Dawson will only lead to a disaster for London. The man is already dead inside. Should I refuse? Perhaps politely suggest that Lord Redgrave turn the man into a vampire himself. Don't you dare, my dear. According to what I've recently discovered, his lordship could kill you for even broaching the subject. Really? Why? I've recently found proof that the Earl of Bristol is of lesser lineage, and only capable of creating skulls. Please tell me more about your recent investigation. As long as you lower your voice. Are you sure your information about Redgrave is correct? He says he's the progeny of the great knight William Marshall, who lived some 9 centuries ago. That's a lie. Lord Redgrave is unable to create anything but skulls, if the poor souls survive at all. How can you be sure the information was correct? I made the acquaintance of a most interesting informer while investigating your maker, from whom I learned the truth about Lord Redgrave. Why so vindictive? You suddenly sound like you're angry. Forgive me, Jonathan. I hate myself for it, but I feel such pride in my discovery. I'm afraid I just can't help it. Which is? He did serve William Marshall. And yes, the blood he covets as a token does truly belong to that legendary knight. But he was never his progeny. His lineage is not so noble. What would you have me do about Dawson? The man is dangerous. Did you know he plans to build a wall to separate the healthy rich from the sickly poor? Do not make him your progeny. What would you do? The man's dying already. Let the Reaper harvest the rotten fruit that is his soul. What would happen if I made Dawson an Ekon like myself? You would add a powerful immortal into a suffering world. An immortal who already craves authority. Maybe I could teach him control, like you taught me.
Lead him down the right path. Mr. Dawson spent his life searching for a way to cheat death. I'm sure he has spent decades dreaming of how he'd spend eternity as a tyrant. Goodbye for now, Elizabeth. Goodbye, my dear. Please, be careful. चलो भाई, यहाँ से एडवाइस लेके हम अभी चलेंगे। अभी हम उसको अपनी तरह वैम्पायर अपना बनाते हैं या नहीं बनाते, तो ये तो भी जाके पता चलेगा। चलते हैं बाहर की तरफ और देखते हैं हमें अभी कहाँ जाना है। जहाँ तक मुझे लगता है मुझे उसको वैम्पायर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये एक चाल भी हो सकती है और हमारा ये मकसद भी नहीं है भाई किसी को वैम्पायर बनाने का। ठीक है, नुकसान ही होगा वैम्पायर बनाने से, फ़ायदा कोई नहीं होने वाला। चलो भाई, अब कहाँ जाएं? क्या हम उसे वैम्पायर बनाएं या नहीं, क्या करना चाहिए? मैं तो वही सोच रहा हूँ। तो मैप खोलते हैं, कहाँ जाना है? वेस्ट एंड की एक बिल्कुल। It looks like vampires have to obey Mendel's laws when producing progeny. Powers pass from one generation to another. That's why Dawson wants me to sire him. अच्छा, चलो भाई चलते हैं, लेकिन मेरा कोई इरादा नहीं है उसको वैम्पायर बनाने का। अगर ऑप्शन हुआ तो मैं उसको बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगा। चलो भाई, हम यहाँ से चलते हैं शॉर्टकट में। चलो भाई, ओए तुझे हम मारेंगे। वेपन ये ले लेते हैं। अबे यार, ये जो फटती है ना, ये नहीं है सही। चलो भाई, कोई लूट तो दी इसने, कोई काम तो आई। इतना दूर है भाई। बहुत टाइम हो गया वैसे गेम में, हमने किसी का वो ब्लड वगैरह नहीं पिया। एक्सपी चाहिए ना कुछ अपग्रेड करने के लिए, इसलिए मैं सोच रहा था। शायद हो सकता है अभी आने वाले कुछ थोड़े से टाइम में हमें ब्लड मिले, एक्सपीज मिले हमें, ताकि हम अपग्रेड कर पाएं चीज़ों को। ये लॉक है। It's locked. I should find another way to get into the neighborhood. अच्छा, सही है। और कहाँ से रास्ता जाएगा? रास्ते ही बड़े अजीब अजीब से। जाना इस तरफ से। ये ले भाई, ये ले, ये ले। अबे कितने आ गए? ये लो भाई, एक तो गया। ओ नहीं ओए, ओहो, मारा खून पीते हो। मम भी पी। खून पिएगा, खून पिएगा, हम तेरा पिएंगे। मार जा भाई, ले ले, छुट्टी कर भाई। करते हैं भाई इनकी लूट। और
लूट बड़ी जरूरी है भाई। चलो अब कहाँ जाना है हमें? ओ भाई कहाँ पहुंच गए भाई? जाना तो हमें कहीं और है। भागो रे भागो भाई। यहाँ पे तो फिर वहीं पे आगे घूमते। You Londoners are no match for me. भाई क्या पावर है? I think this passage could lead me close to Moses Dawson's mansion. भाई You're mine. Your prey is mine. ओ भाई शैडो। फंस गया भाई। मारेगा तू तो मेरे हाथों। You're mine. You're feeble. ये ले मार गया। इतनी सी बात थी। ओए जाना कहाँ था? ओके भाई हम आ गए यहाँ पे। चलो भाई चलते हैं। टेम्पल सीवर्स कहाँ पे? नीचे की तरफ जा रहे हैं हम। भाई एक्सेस करना है उसके मेंशन को। भाई पजल फिर से ना आ जाए वो पानी वाली पजल। यहाँ से तो नहीं जाता रास्ता। कहाँ से जाना है? इस तरफ से। ये तो लॉक है भाई। It's locked, all right. ये लो भाई। I can't believe I'm doing this. करना पड़ेगा रे, करना पड़ेगा ब्लड के लिए। चलो भाई यहाँ पे क्या होने वाला है? No one can hide from Oh. Ascalon. ओ भाई ये कहाँ से आ गया? आई क्या फाइट डाली है यहाँ पे? ओए For Ascalon. ये वही है क्या? भाई इसकी तो अभी काफी हेल्थ। वेपन चेंज कर लेते हैं। चलो Show भाई me your power. पावर दिखाता हूँ, शो कराता हूँ भाई। क्या हो गया? क्या हो गया? ओए होए क्या हो गया? आराम से मारूंगा। ओए होए ये ले
पावर तो वापस आने दे एक बार। अरे शैडो Give me your... ये ले। ये ले भाई भाई, I will crush you. ये ले क्रश करेगा अभी तो हम तुझे करेंगे। फिर से शैडो भाई, Your blood is now mine. नहीं भाई तेरा कैसे हो गया, मारा ब्लड हमारा ही है। चलो भाई दोबारा कोई वेपन चेंज करते हैं अच्छा सा। ये सही है भाई। ये सही हाथ खाती है भाई। Show me your power. वेपन चेंज, देखते हैं क्या कर पाते हैं हम यहाँ पे। ये रखते हैं। Kneel, Trent. ब्लड पीना है भाई हमें। No one can hide. ये ले भाई ये ले, ये ले भाई। Show me your power, newborn. न्यूबॉर्न ही तुझे मारेगा बेटा। No one can. ये ले ये ले ये ले। क्या कर रहा है भाई? Your blood is now mine. ये ले। ये ले। भाई हमारे पास शुगर है, इंजेक्शन पड़े हुए हैं, नहीं तो अब तक तो हम मर जाते। Kneel, traitor.
चेंज। ये ले भाई, ये ले भाई। ओ भाई शैडो से बच। जाया होगी बुलेट, जाया होगी। क्या लें, क्या लें? भाई 3 गोलियां और की हिम्मत टूट जानी है। Can hide from Ascalon. ये ले भाई, मार गया भाई फाइनली। मारा भाई, ये तो टूट ही दे जाता भाई। इतनी हमारी चीजें ज़ाया करवाई हैं तूने। अब हमें जाना किस तरफ था? इस तरफ क्या और कहीं जाना था? ना भाई, ये ना हो कहीं और निकल, वापस बाहर निकल जाए हम। नहीं आए तो हम ऊपर से थे, जाना वहीं पे है। यहाँ से लूट उठाते हैं, अब मूव करते हैं। जी रास्ते से जाना है भाई। ये रास्ता हमें कहाँ लेके जा रहा है? कोई भी नहीं है भाई। चलो भाई चले। मार्ग तो कहीं और बता रहा है, इस तरफ जाना था। लो भाई हम पहुंच गए यहाँ पे। ये तो कहीं और का बता रहा है भाई। ओ यहाँ पे आना था। रास्ता बनाना पड़ेगा हमें। यहाँ पे दोबारा वापस नीचे देखते हैं भाई कहाँ से कहाँ पे रास्ता जा रहा है। I cannot enter. ओ तो ये ऊपर करना पड़ेगा। Ammo midi shotgun. It's locked, all right. चलो भाई चलते हैं वहाँ से। पजल ही पजल है भाई, क्या पजल है भाई। ओए ये कहाँ से आ गया? ओए इतनी कम सी जगह पे कहाँ पे फाइट होगी? अबे चार आगे। अबे इतने सारे वैम्पायर यहाँ पे घूम रहे हैं। कुछ चैन करना पड़ेगा। अबे यार जगह ही नहीं है, भागो कहाँ पे? ये ले भाई, ये ले।
बचना भी पड़ेगा। ये ले, ये ले, ये। अबे अबे नहीं यार। मारो भाई। ये ले, ये तो गया। एक तो गया। अबे नहीं यार। ये ले, ये ले, ये ले। ये ले भाई, ये ले, मारा। 2 रह गए, आखिरी 2 रह गए। बच गया भाई। ये ले, ये ले। ओ भाई, ओ भाई। ये गया। ये तो गया, एक रह गया। भाई तू डिफेंस कर ले। ए रितो, ये ले, ये ले, ये ले, ये ले भाई। तेरा तो हम खून पिएंगे। ये ले। चलो भाई, सबको मार दिया हमने यहाँ पे। बहुत ज्यादा आगे थे यार अचानक से। कहाँ जाना है अभी? ये ओपन हुआ। जाना तो हमें उसी तरफ हो। यहाँ से ऊपर जाना है क्या? ऊपर जाना है यार। तो यहाँ से चलते हैं सीधा। अरे भाई, रूट करना जरूरी। रूट करते हैं, चलते हैं भाई। यही जाना ना। I have this thirst for blood. हाँ भाई, प्यासा है खून का। मैं तुझे चूहों का खून पिलाऊं। यहाँ पे जाना चाहिए। ओ भाई, एक नया सामान है भाई। मैं समझा कोई चीज मिल गई है। चलो भाई, क्या से बाहर कहाँ पहुंच गया? हम पहुंच गए ना? हाँ,
Good evening, sir. May I ask you what you're doing here at this late hour? I'm conducting an investigation about the epidemic in this part of town. And who are you, sir? I'm Dr. Jonathan Reed from the Pembroke Hospital. May I ask who you are and why all the questions? I'm Detective Inspector Charles Albright from Scotland Yard. And I don't find your answers convincing. What is a Pembroke doctor doing in the West End at this time of night? हम क्या कर रहे हैं? I work for the Ascalon Club. Here is my permit to go freely about the city. The Ascalon Club? You should have said so, sir. I must warn you, these streets are dangerous, and you'd better be careful. Do you know anything in particular about a man called Aloysius Dawson? Who doesn't know the man? I think he intervened personally to put an end to the police strike of last August. What else can you tell me about him? Aloysius Dawson is exactly the kind of powerful and influential man who could commit murder and get away with it, with just one phone call. What are you investigating, exactly? I currently have a few missing persons cases. Mr. Tadao Kimura and Miss Louise Teasdale. I'm afraid they may have been abducted by my mysterious maniac. Tell me about Louise Teasdale. She's a waitress. Her father reported her missing. We don't have enough men to search for her, sadly. Do you have any idea where she could be? No. But I feel she's been abducted. She went to a pub a few nights ago and vanished. I thought about the sewers, but I'm not equipped for such an investigation. Tell me about Mr. Kimura. Mr. Kimura is a businessman who has been missing for a few days. He didn't go home, didn't go to work, didn't go back to his family. Where was he last seen? Mr. Kimura was last seen at the Royal Observatory in Greenwich. I followed a possible lead in the West End, but I found nothing. अच्छा भाई, back और personal question. क्या Do you पूछ? need medical attention, Inspector? I'm afraid I may have caught something. I don't feel too well. You'll quickly feel better after taking this. Thank you, Dr. Reed. I really appreciate it. चलो भाई, ये सही है. Back और Do you know any? What? Aloysius. बताओ, क्या बताओ भाई? Goodbye, Detective Inspector Albright. Goodbye, Dr. Jonathan Reed. I'm sure we'll talk again soon. चलो भाई, सही है. मूव करते हैं आगे की तरफ. यहीं से बंद था भाई वो डोर. इतना घूम के आना पड़ा हमें. चलते हैं, घूमते फिरते हैं भाई. यहाँ अंदर क्या है? Dr. Reed. Oh. I am glad to see you again. Good evening, Miss Price. How are you tonight? Dr. Reed, I didn't know you had returned from the war. I had a new doctor when you left, but he's not as kind as you. Always glad to see a former patient in good condition. It's been a long time. Too long indeed. And as a token of my appreciation, I'll grant you the best price if you fancy buying anything from my humble shop. Good evening, sir. Do you know Aloysius Dawson? Everybody knows him. He's only been to my shop once, though, looking for rare books and other intriguing antiques. Did he buy something from you? No, he left quickly. He almost laughed at my goods. Mr. Dawson may be a rich man, but you can't buy good manners. But isn't Aloysius Dawson known for his philanthropy? That was before his brother Robert died in an aeroplane crash. Since then, the remaining twin has turned into a heartless tycoon. I am sorry, I can't help you, sir. May I look at your goods, Miss Price? It's always a pleasure to have you here, Dr. Reed. Take all the time you need. चलो भाई, कुछ लेते हैं यहाँ से. हाँ, बाय करते हैं जो चीज़ें ज़रूरत है हमें.
ये भी बाय कर लेते हैं, ये भी। चलो भाई, सारा कुछ बाय कर लिया हमने। कभी Dr. Reed. चलो इससे बात करते हैं, इससे बात करते हैं। Good evening, Miss Price. I'm Dr. Reed. Do you remember me? Dr. Reed? Yes, of course. You are the doctor who healed me and my mum. Good evening, Dr. Reed. Good to see you too, Carol. Are you all right? Oh, yes. I did not hurt myself recently. I know how to take care of myself now. I'm almost a grown-up. Do you need my medical attention? Oh, please, sir. Do not waste your time with me. There is nothing to be worried about. Don't be shy. It's my duty to take care of you. Thank you, sir. Much obliged. Have you ever met the famous Aloysius Dawson? Yes. A very strange man. Not very nice. What do you mean? He said he was ready to pay good money for rare books, and then laughed at what we showed him. Do you enjoy working with your mother? Oh, yes, Doctor. My mother raised me alone after my father died. We've always lived together, and she has always watched over me. Do you ever think about getting married now you're a woman? Oh, no, Dr. Reed. Mum always says I'm still a child who has no idea how tough life can be. No husband would like a clumsy girl like me. Do you remember your father? No, I was just a baby then. My mother always told me how strong and good he was. Why are you awake at night, Carol? I am helping my mother in her shop. It's not easy, but I'm a grown-up now. Why is work not easy? Is something or someone bothering you? Oh no, most people are gentle with me. But I'm so nervous sometimes. I pay no attention and hurt myself. Good thing my mum learned first aid. I'm sure your mother is grateful for your help. I do the best I can. But I'm so clumsy sometimes. I drop things. I injure myself. It's a good thing my mother has the patience of an angel. Back. Goodbye, Carol. चलो भाई यहाँ से निकलते हैं और ये तो लॉक है। It's locked. Good evening, sir. अरे भाई ये क्या It's locked, all right. चाबी दो भाई, हम यहाँ से कॉइन ले लें। ओए, इसकी दुकान खाली करते हैं। क्या करेगी भाई तू इन चीज़ों का? वैसे भी वैम्पायर बन जाना है तुम सब ने एक दिन, कि मैंने तुम सबका खून पी जाना है। चलो भाई चलते हैं जहाँ पे जा रहे थे डॉक्टर, और जिसको वैम्पायर बनाना था या जिसको नहीं बनाना था। Good evening, sir. I'm Dr. Reed. Can I be of assistance? Dr. Reed? Dr. Reed? Is there anything wrong? No, it's just... Your name sounds familiar. And your face. Have we met before? I think I would remember. So I suppose the answer is no. That's odd. I'm certain I've already heard of you. My name is Pericles Baker. Does that mean anything to you? I'm afraid not, sir. But it's a pleasure to meet you anyway. The pleasure is mine, I guess. I only wish I could remember when it was that we met. क्या पूछें और इससे इसको मेडिसिन दें? Do you need my medical attention, sir? I'm afraid I do. I knew we should have left London. I don't want to appear tactless, but you're risking your health by remaining outside at this hour of night. Says the doctor who also works outside at night. But as always, the imprudent person enjoys the company of their fellows. What can you tell me about Aloysius Dawson? I've heard this is a man who has searched for his place in the world for a long time. I hope he found it. अच्छा भाई। बैक। चलो भाई छुट्टी कराओ, आगे चलते हैं और किसी को पकड़ते हैं भाई। ब्लड ट्रेल भाई।
ओ हाइड आउट में चलते हैं भाई। अपने एक और नया हाइड आउट मिल गया यहाँ पे, शायद कुछ चीज़ों को हम अपग्रेड कर पाए। खास ही है वैसे जो हम मिशन पे जाना है, पहले वहाँ चलें। चलो भाई। Unknown. I cannot enter. चलो भाई, चर्च की बेल बजती हुई। जाना कहाँ पे है भाई? फौरन जाओ भाई भागते हुए। ऑफिशियल है, हेल्थ वार्निंग। चलो भाई। ओ यहाँ पे दो बंदे बैठे हुए, इनसे बात करते हैं। Good evening, sir. I am Dr. Jonathan Reed. Do you need my help? Yes, please. Would you be kind enough to tell me what the time is? That's all you need to know. Well, is it not important to know? As important as where you are? Or who you are? I suppose you're right. And who are you then, sir? I am Agamemnon Baker. Like my brother, I think we need to leave this city immediately. And my brother and I rarely agree on anything. क्वेश्चन पूछते हैं इससे, बैक और हेल्थ इसकी देख लो भाई। What can you tell me about Aloysius Dawson? You should ask that question to my brother instead. Personally, I've not seen Aloysius for many years. What can you tell me about your brother? He's older than me, I think. But the important thing is that I really hope I'll die before him. Grief would just kill me, you know? Is that all? Pericles is very attached to this city, and without my insistence, he would never leave this place. We don't often agree on anything, you see? चलो भाई इससे और पूछते हैं। Do you need my medical attention, sir? Indeed. I've never been good at explaining my feelings, but I can tell when my body is hurting me. You have nothing to be worried about. You should recover by taking this. Sounds so easy to fight disease. Too bad it's not the same making people smile again. Goodbye for now, Mr. Baker. Hello again, Dr. Reed. दोबारा। भाई ये तो गया, ये तो भाई इसका तो हम खून पियेंगे। चलो भाई तो साइड पे लेके चलते हैं। ये ब्लड लाइन हमें लेके जाएगी साइड पे, फिर हम इसको एम्बैरस करेंगे, इसका ब्लड पियेंगे, फिर उससे हमें एक्सपी मिलेगी। एक्सपी से हम अपने सेफ हाउस पे चीज़ों को अपग्रेड कर पाएंगे। ये मजबूरी है भाई, हमें करना पड़ेगा, इसको मारना पड़ेगा। तो हम भेजते हैं भाई कंट्री से बाहर, हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से भेज देते हैं। This makes no sense. No sense at all. I should have told my brother to go sooner. ये चीज़ ना। चलो गाइस वापस चलते हैं और इसके आप भाई से बात करते हैं, भाई से। अब लगता है उसका खून पीने का टाइम आ गया है, उसका भी खून पियेंगे हम। वो भी यही बातें करेगा और जब उसके बाद चलो बात करें। Good evening, Mr. Baker. Why do I always have feelings of deja vu when I talk to you? Tell me more about your strange feelings towards the city. I would be happy to describe them, but it's too hard to explain with mere words what I'm feeling. It's unclear, too confused. Go on, please. Where should I start?
The world is chaos. Men go mad and nature itself runs roughshod over us all. This is not the first time mankind has faced a deadly epidemic or a war. Men kill each other while nature decides to kill them all. I don't know what scares me the most. Do you? चलो भाई इसको क्या बोलें? Both can be disastrous, and a combination of the two merely increases their potency. And what if they were just a sign of worse disasters to come? Something of biblical proportions, I wonder. How long have you been waiting for this man? Sometimes I feel as though I've been waiting for him for ages. Perhaps it is my role in life to wait for him. Not a pleasant thought. It could be dangerous for you, waiting here all night. That's quite true. But what other choice do we have? We are waiting here until we finally go. Why? Mr. Baker, I have met many strange people during my life, but you are definitely one of the strangest. Really? I don't feel particularly odd or weird. All I want to do is leave. What's wrong with that? Why are you still waiting for this person? What would be the point of going before meeting the man, as he's going to help us leave? Back. Who are you waiting for? I'm sure he has a name. I really can't answer that question, since I don't know that person. And why is that? This person is mostly my brother's acquaintance. I don't even know his real name. Only that this man could help us leave this city once and for all. But why would you need this person's help to leave London anyway? Well, I thought we should have left this cursed place already, but my brother convinced me to stay a while longer, and here we are. Okay. Heracles, what are you going to do now? I don't know. Perhaps it's time to leave. Perhaps we should stay a little longer. How can I tell? And where exactly are you thinking of going? In a place where I will finally have that feeling, to be where I belong. The world has to be meaningless chaos to make such a heaven plausible. Back. Oh भाई ये भी गया. चलो भाई इसको भी लेके जाते हैं. इसका भी खून पीते हैं भाई. आया ना मजा. इसको हम भेजते हैं ना कंट्री से बाहर. हम भेजेंगे इसको कंट्री से बाहर. तू जिसका वेट कर रहा है वो तेरा वेट करता रहेगा भाई. हमें एक्सपी से मतलब है. मजबूरी या खून पीना पड़ेगा. मेरे भाई का भी पिया है और वहीं लेके जाके तेरा भी पियेंगे. हाँ हाँ हाँ. ब्रोम ब्रोम. क्या बोली जा रहा है भाई. एम्बैरस, एम्ब्रेस या एम्बैरस जो भी है. Oh, तू भी So क्या? in the end, was it you we were waiting for? Death was our destination. हाँ ये चीज ना पता होना चाहिए तुमको. चलो भाई चलते हैं अभी अपने मिशन की तरफ. हमारा लेवल 25 हो चुका है. हेल्थ ज़्यादा है. स्टेमिना हमारा देख लो. ब्लड वाला भी कम है. इन दोनों का हमने खून पी लिया है. चलो भाई यहाँ से कचरा परोलते हैं. अब जाना है भाई हाइड आउट में. अब शायद कुछ चीज़ें हम अपग्रेड कर पाएँ. जब मैं ब्रांड मिला मिशन की तरफ जाने वाले थे लेकिन दो बंदे मिल गए रास्ते में. ओह ये लेवल भी कर ले. और क्या चीज करें. ये भी आप ज्यादा डैमेज देगा. नहीं है. क्या करें और.
कर सकते हैं। ओ भाई बाइट वाला ही कर लिया। एक्सपी नहीं हमारा। ओ भाई ये दो भी हैं डिफेंस वाले, अभी तक हमने खोले ही नहीं है इनको, अभी तक हमने इनको किया ही नहीं है। नो नो भाई कंफर्म करना है। चलो भाई हमने अपग्रेड कर लिया, सिर्फ 2 बंदों का ब्लड पीने की वजह से हमारे पास एक्सपी ज़्यादा हो गए थे। अब हम चलेंगे। ओ हो ओए ओए भाई कितना कम हो गया वो। बहुत जल्दी ये लगता है गेम खत्म हो जाएगी। द वेस्टर्न ऑफ फ्लेम बैक। चलो भाई चलते हैं फायर की तरफ, निकलते हैं अपने मैन मिशन की तरफ और डॉसन को जाके देखते हैं क्या होना है उसका। डॉसन एंड डॉसन का क्या बनेगा अभी। चलो भाई लगता है हम पहुंच गए हैं। Dawson's Mansion में हम पहुंच चुके हैं गाइस। Dawson's Mansion. Here I am at last. Oh. But the question remains. Am I ready to make a dying man my progeny? क्या मैं उसको प्रोजेनी बनाऊं, मतलब कि वो मेरे आगे वो होगा वैम्पायर, उससे तबाही भी हो सकती है। यार मैं नहीं बनाऊंगा, ऑप्शन मिला तो मैं नो कर दूंगा भाई। नहीं हम उसको मार देंगे या जो भी हुआ छोड़ देंगे, हम उसको ये नहीं करेंगे भाई, अपना प्रोजेनी वगैरह नहीं बनाएंगे, क्योंकि एलिजाबेथ ने भी हमें मना किया कि भाई उसको नहीं बनाना नहीं चाहिए। लूट वगैरह कोई हो मिल जाए हमें। हाँ यहाँ पे तो काफ़ी सारी लूट वगैरह है, हम कर सकते हैं। पॉइंट्स। चलो भाई मूव करते हैं, आगे 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 जाना है। ओके गाइस चलो। इधर है, नीचे की तरफ है कहीं पे। लूट काफी है वैसे। ओहो लूट ही लूट है भाई। अमीर बंदा है ना। यार इसकी चाबी वैसे कहाँ से मिलेगी, हम जगह जाते हैं ये वाली तिजोरी की चाबी नहीं मिलती हमें। कहाँ है डॉसन बाबा, हम वैम्पायर बनाने आए हैं, कहाँ हो भाई। बहुत अमीर था ये, अपने वक्त का बहुत रिच बंदा है ये। Finally you're here, Dr. Reed. What took you so long? I had to pass several of your barricades and outposts to access your mansion, sir. Death, pestilence surround us, and time is against me. I see you've gathered some of the most expensive, albeit experimental, blood transfusion equipment available. All this could be so useful in a hospital. Yes. Since Lord Redgrave sent me a doctor to perform my conversion, I thought you might find some of these devices useful. Most thoughtful. But tonight I'm not here as a physician. But I feel reassured that a specialist such as yourself would help me to escape the Reaper. Very well. But before I proceed, I have a few questions for you. If you must, but be quick, for I don't have much time left in this life. First of all, I need to be sure that you know exactly what is going to happen to you, sir.
I can assure you I'm as informed as any man can be. I have planned for this moment, Dr. Reed. Planned very carefully. Believe me, there is a huge difference between reading about vampires and waking up as one. I learned that myself the hard way. Oh my God, man, stop your whining. I don't have time for your pointless jibber-jabber. You'll need to feed on warm blood. Blood from mortals. How do you feel about that? I'm rich, Dr. Reed, and powerful. I'm sure I'll be able to acquire all the blood I need without ever having to sully my own hands. I will become your maker. Do you understand what that means? Well, I certainly won't consider you my liege, or some such drivel. You can be assured of that. What do you know about the Guard of Priwen? What I do know is that I'll crush anyone or anything that would dare to oppose me. Let's move on then. Please, I'm cold and tired. I feel my life waning with every moment. But first, before you embrace immortality, what would you do with such a gift? That's a rather impertinent question, Dr. Reed. And I will do as I please. Answer me all the same. What will your first action be as an immortal? To save London. I will finance the most efficient quarantine ever seen. I will build a wall that will separate the sick boroughs from the healthy ones. Who gave you the right to decide the fate of thousands of people? My money. My money and my pending immortality gives me the needed authority, Doctor. I'm a businessman. I'm used to tough decisions. You really plan to build a quarantine wall across London? Yes, it will be tall and strong, separating the wheat from the chaff. Let me guess. You mean to isolate the rich from the poor? This is a desperate measure for desperate times. England must prevail, Doctor, no matter the cost. By doing so, you will also create two separate prisons. Come, sir. An eminent doctor like yourself knows that such radical measures have proved efficient in the past. Quarantine is not a bad idea, medically speaking. But I'm convinced this epidemic will not be contained by mere walls. As long as the right people are on the right side of the wall, that's all that matters. What if a new outbreak happens inside your walls? You'll have created a giant trap. That won't happen. As long as we dispose of anyone that is contaminated, as soon as they are spotted. But you can't guarantee infection will not spread. Just one contagious carrier would be enough to create an apocalypse. The apocalypse is already knocking at the gate. We must be strong now. I've heard enough. It's time to proceed. At last. All right, do what you have to do. If it hurts, so be it. I've been preparing such a long time for this. ओके ऑप्शन मिल गया. मैं तो भाई इसको नहीं बनाने वाला. मैं तो इसको एम्बैरस करूंगा. एम्बैरस. You don't deserve immortality, Mr. Dawson. What? What are you prattling on about? I don't believe I've ever met a man so bereft of empathy. You, sir, are despicable. No! Wait! You can't! I made a deal with Lord Redgrave. I'll finance whatever he wants. Please, just ask him. Sleep now. Rest now. Forever. I would have lived forever. Who are you to decide my fate? Who gave you the authority? चलो भाई. इसको मैंने नहीं बनाया. मैं इसको बनने नहीं देने वाला था भाई. चलते हैं भाई. अब वो जो भी है उसको जाके बताते हैं भाई हमने ये कांड किया है. तू जो कर रहा है तो खाड़ना है खाड़ ले.
ओ ये खड़ा हुआ है, करते हैं बात इससे। Is it done, Dr. Reed? Is Aloysius Dawson reborn as expected? Alas, Aloysius Dawson was not brought back to life after his death. The man is gone. What? What happened? He didn't survive the procedure. He was too weak. This is unacceptable, nevertheless. You were given the simplest task. Well, get rid of me then. From now on, you're an outcast. Banished. You are forbidden to ever appear in front of us again. Ascalon will smite you on sight, and your heart will be thrown to the rats. I'll leave you then. Have fun with your puppets and shadow plays, Lord Redgrave. Yes, go, traitor. And take that awful creature, that counterfeit of a woman I saw waiting for you, and be gone! एंड बाय द स्वॉर्ड यू डाई। ओके गाइस, तो हमने इसको करारा जवाब दे दिया। हाँ भाई, गुस्से में होता है भाई ये बंदा। चलो जो भी है, हमने उसको बनने तो नहीं ना दिया अपना, वो क्या कहते हैं जो भी है, अपना हमने उसको वैम्पायर तो नहीं ना बनाया। चलते हैं बाहर, को लेडी वेट कर रही है हमारा, ये यही है, बात करते हैं इससे। We meet again at the strangest of times, young Ekon. So do you serve the Earl of Bristol now? Old Bridget. What are you doing here? Your friend, the wise Ekon. She sent me to warn you. बताओ भाई। How did you meet Lady Ashbury? She came to us in the sewers in search of answers. Just as you did. Lady Ashbury in the sewers? Now that's a sight I wish I'd seen. She said she was your friend, and that she sought the identity of your maker. So I answered her questions. What kind of answers did you give her? I knew nothing of your maker, but we talked. We talked a lot. Her words and ideas are captivating. It is no surprise that you like her. I like her too. Did anyone see you? It's a long way from the dock sewers, and hunters are patrolling the streets here. Who said I took the streets? How do you think I survived for centuries in this city without ever being seen? I know all her secrets. Lady Ashbury? You know her? Tell me what's going on. The lady approached me but a few nights ago, wanting to meet the sewer skulls. Once she questioned Harriet Jones. She agreed to help us. Harriet Jones is still with you then? How is she doing? Harriet remains angry, but is recovering slowly. Her mind is twisted, but at least her body is healing. Tell me what is going on. The lady asked us to keep an eye on your mortal doctor friend while you were away. We spotted the hunters. They were discussing plans to attack tonight. Wait, slow down. I need to ask you something. I'm listening, but I do not have time to waste, so be quick. Oh bhai. Why do I feel like Lord Redgrave was particularly irritated to see you? Far more so than the average Skull, if I may say. Because I used to know him quite well, and he is afraid I may remember who he really is. You're Elizabeth's informant. You're the one who told her about Lord Redgrave's lies regarding his lineage. Yes, but my words were not meant to hurt or threaten. I simply told the story of the sewer skulls, and of so many other forgotten children. Where is Lady Ashbury right now? She said she will go home. She needed to speak with some old friends first, though. Do not worry, young Ekon. She is no fool, and just as strong as you. No time to lose, then. I must go there right away. I shall return to my den. Have you a message for the lady? Should I see her before you? Tell her I worry about her. Do not. For she has had strength and wisdom for so much longer than you.
Go now and take care, young Ekon, for the flames are rising. भाई जो हमारा जोनाथन है ना कहीं ये एशबरी से प्यार करने लगा है भाई। ये मतलब फ्रेंडशिप और लव वाला सीन है अभी दोनों के बीच में। तो भाई जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। हम रास्ते में कहीं भी फाइट नहीं पकड़ने वाले। हमने कहीं भी फाइट नहीं पकड़नी, सीधा पहुंचना है भाई अपने एम्ब्रक हॉस्पिटल में पहुंचना है जल्दी से जल्दी। वहाँ पे भाई देखते हैं क्या होने वाला है। कोई फाइट ही होगी। चलते हैं भागते हैं। और जो लेवल हमारा जितनी तेज़ी से भाई ऊपर जा रहा है ना, उस हिसाब से हमारी फाइट भी बड़ी गंदे वाली होने वाली है। भाई यहाँ से सीधा हमें जाना है पैम्ब्रिक हॉस्पिटल। मार्क लगा लेते हैं ताकि हम जल्दी जल्दी भागते हुए पहुँच जाएं। चलो भाई ऊपर फास्ट जाना पड़ेगा। कहीं पे भी फाइट नहीं लेनी, जल्दी जल्दी जाएंगे। वाइट चप्पल में हम आ चुके हैं, वाइट चप्पल सिटी में। तो और यहाँ से अभी सीधा राइट लेना है। भागो 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 भाई, यही तेज भागना है। मैप और यहीं से जाना है नीचे। It's locked, all right. ओ भाई ये तो लॉक्ड है। ओ भाई चलो मैप ओपन करके देखते हैं कहाँ से जाना है। यहाँ से आगे नहीं, ये तो नहीं, यहाँ कहीं आगे। आगे से राइट। भागो 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 भागो, जल्दी पहुँचना है भाई पैम्ब्रक हॉस्पिटल। चलो भाई वाइट चैपल स्ट्रीट में हम पहुंच चुके हैं। जल्दी जल्दी। ओए होए हमें फाइट नहीं करनी, फाइट करनी ही नहीं है भाई। बाद में करेंगे, बाद में मारूंगा। अभी तुम थोड़ा जिंदा रह लो, हम तुमको से बाद में फाइट करेंगे। करो करो करो, फाइट करते रहो अच्छी बात है। हम भी करते होते हैं, लगे रहो भाई। नहीं भाई नहीं भाई, हम फाइट करने नहीं चाहते। What is this trouble? Are the vampire hunters here already? ओए होए, यहाँ पे कोई ना कोई पहुंच चुका है भाई, तो हमें जाना पड़ेगा। Evolving नाइट, सी रात को इतनी सारी चीजें। मर्डर ऑफ डॉसन, हाँ ये भी न्यूज़ में आ गया। टेरिबल न्यूज़ फॉर लंदन, ये भी मर चुका है गाइस, सब मर गए। चलो भाई हम हैं पैम्ब्रक हॉस्पिटल में और सबको रिफिल करते हैं भाई। कुछ बुरा होने वाला है क्या? कुछ हम क्राफ्ट कर सकते हैं यहाँ पे, कुछ बना सकते हैं, देखते हैं शायद कुछ हम बना पाए। किसी भी चीज़ को अपग्रेड नहीं कर सकते हम। चलो भाई कहाँ से, यहीं से चलना है क्या? हाँ सही, दूसरी साइड से चलना पड़ेगा भाई। कुछ बहुत बुरा होने वाला है, ऐसी वाइब्स आ रही हैं, देखो होता क्या है। चलो भाई चले। जरूर कुछ ना कुछ होने वाला है। यहाँ पे देखते हैं। Those bastards. What have they done to Edgar? एडगर के साथ क्या किया भाई? सब कुछ आगे पीछे।
चलो भाई चलते हैं। ये ब्लड ट्रेल जा रही है, ये रहा हाथ, यहाँ से कोई लेके गया है भाई। ये ब्लड ही हमें सही रास्ता दिखाएगा। ओह लेफ्ट, चलो भाई देखते हैं क्या होने वाला। कुछ ना कुछ तो होने वाला है यहाँ पे। ओ भाई Ultraviolet curtains and orichalcum powder. Dr. Swansea's always been a resourceful bastard. I bet he never told you he had this installed in case of a vampire attack. Says a lot about how much he trusts your kind. What have you done with Edgar? Don't worry. We don't kill humans. Even if your friend is deserving of a little punishment for what. What are you talking about? We know everything. Swansea and you created this bloody epidemic. You aim to unleash another disaster, just like William Marshall did. No! I'm trying to put an end to it, just like you are. You're the progeny, aren't you? Where is the monster hiding? It's still in England, isn't it? I have no idea what you're talking about. Jeffrey, please listen to me. No tricks. That shit won't work on me. We've found proof in the theater. Doris Fletcher was your first experiment. Now where is Marshall? Speak! So much for modern technology. Time for the tried and true. Do you know what this is, Beast? This is a drop of King Arthur's blood. The blood of a true defender of Britain. Stronger than your evil powers. This is ridiculous. We're losing precious time. True enough. फाइट होने वाली है बहुत ही मजेदार भाई। इसकी वो बो मिल जाए मेरे को, ये वाली एरो वाली, ये चीज शायद हमें मिल जाए, बहुत मजा आ जाए। लेकिन उससे पहले हमें इसको मारना पड़ेगा। वेपन वगैरह चेंज कर लेते हैं। Poisonous bite is useless on me. I know! It hurts, doesn't it? Come on, Reed. Try something else. ये ले भाई, ये ले। अबे बच गए यार। ओ भाई, ओ भाई। If you're so innocent, why does simple light burn you so much? ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, ये ले। भाई धूप में जाने से तो हमारी हालत खराब हो जाती। चेंज करते हैं वेपन। इससे कोई फर्क। Take you down. Close your eyes. This is gonna hurt. Free wind prevails. ओ भाई ये तो बहुत स्लोली डैमेज खा रहा है। ये तो हमें ज़्यादा डैमेज देगा।
यहाँ पे हमारे पास शॉटगन की बुलेट्स होती तो हम इसको क्या ही मारते भाई। Come on, Reed. I know. It hurts, doesn't it? The blood of a true defender of this land will protect me. हमें मारेगा। Show some style. Close your eyes! This is gonna hurt. ये ले। ओ भाई ये धूप जो इंसान ना क्या सही डैमेज है। ये ले। अबे भाई अबे नहीं। ये ले। आजा। I know! It hurts, doesn't it? Close your eyes! This is gonna hurt. नहीं भाई नहीं, इतनी जल्दी नहीं। वेपन चेंज करते हैं। इसकी जगह हम चलो भाई, ऐसे तो इसकी हेल्थ आधी रहेगी। ये ले। ये ले। ये ले। ये ले। ओ भाई बचो भाई। थोड़ी सी हेल्थ रह गई है इसकी। कोई और चीज चेंज कर लेते हैं यार। ये ले, ये ले। बाबा ब्लड भी नहीं है और हेल्थ भी नहीं है। भाई थोड़ी सी हेल्थ रह गई है इसकी। हमारे को पास भी ब्लड नहीं। ये ले, ये ले। आप ब्लड मिलेगा ना। ये ले। ये ले, ये ले। बस इसको आखिरी दो पढ़नी है। आखिरी दो पढ़नी है। ये ले।
आखिरी 2-3 छाटें रह गई हैं समझ। I know. It hurts, doesn't it? चाहिए भाई। True light will cleanse. ये ले, ये गया भाई। मार लिया। We are the guardian of justice. Priwen shall prevail. You can't accept the fact we're not enemies, can you? We always have been, and we always will be. Of all the evils that threaten mankind, your kind are the worst. I'm not saying we could be friends, you and I. But perhaps we could collaborate to put an end to this epidemic. Never! We are Priwen. We do not negotiate. We do not compromise. There is no way you'll ever let me be, McCullum. You'll always hunt me down, won't you? There is no escape, Leech. Kill me now. For there is no way you can sway me to your ideals. That's where you're mistaken. What do you mean? I'll spare you, McCullum. I'll offer you the mercy you never offered me. What is this ruse? This is no ruse, McCullum. This is me letting you go. After all, you and I are both trying to save this poor country in our own way. I'll kill you, Reed. Next time we meet, I'll end you. See? Progress already. You called me by my name. Until the next time. Goodbye, Hunter. चलो जी, इसके साथ भी फाइट हुई लेकिन हमने इसको छोड़ दिया अभी के लिए। और देखते हैं भाई, तकरीबन हम आधा 1 घंटा और प्ले कर लेते हैं, फिर लाइव स्ट्रीम को एंड करते हैं। काफ़ी बड़ी लाइव स्ट्रीम हो गई है। चलो अच्छा ही है यार, ये गेम ख़त्म हो, ये गेम ख़त्म हो तो फिर हम जो उनसे नेक्स्ट गेम जो है वो स्टार्ट करें। बहुत ही मज़े की है। ये जैसे ख़त्म होगी मैं शॉर्ट वीडियो लेके आऊँगा, फिर उसके बाद मैं जो उनसे ना हो सकता है लाइव स्ट्रीम करूँ, और लाइव स्ट्रीम नहीं तो फिर मैं रिकॉर्डेड गेम प्ले ज़रूर डालूँगा। बहुत मज़ेदार स्टोरी है। काफ़ी टाइम ले रही है ये लोडिंग में। अब इस गेम में हम काफ़ी एंड पे हैं, बहुत ही एंड पे हैं। ठीक है, आई होप कि नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम के अंदर हम इस गेम को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि ओके गाइस, चीज़ें लोड हो गई हैं। अब हम चलते हैं। लूट मिली हमें यहाँ पे, नीचे की तरफ। अब हमें कहाँ जाना है? थिएटर में जाना है क्या? हाँ, ये लिखा हुआ है थिएटर में जाना है। चलो गाइस, चलो निकलेंगे गाइस यहाँ से और पहुँचे थिएटर में। Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. एमो चाहिए वैसे हमें। Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? Do you need any medical help, Milton? I'm afraid I do.
like everyone in this hospital. It's a sad state of affairs when even the hospital workers are worried about disease. Our job brings us into contact with all kinds of infections, Milton. There's no shame in being ill while you're in a hospital. That's easy for you to say, Doctor. I get the feeling you don't fall sick often. And thanks anyway. चलो guys. Goodbye, Milton. Goodbye करते हैं इसे. चलते हैं. And I thought last summer's epidemic was difficult. Oh भाई. चलो भाई चलते हैं. बात करते हैं इससे. Hello again, Mr. Blight. I'm happy to see Mr. Thatcher is safe for now. I'm eternally grateful, Doctor. We were total strangers and you helped us anyway. Can't thank you enough, sir. Do you need medical attention, sir? Afraid so. In the war, I was always worried about picking up something, getting some infection. Unfortunately, I've got that fear in London now. Throughout history, some diseases have done more damage to armies than any weapon created by man. You were wise to be careful. You're working at the Pembroke Hospital, aren't you? That's a good enough reason for me and Oswald to go there. Goodbye, Okay, Mr. goodbye. Blight. Take care of yourself. चलो गाइस निकले यहाँ से. इनका भी ब्लड पी जाना है एक दिन हमने. आहा. कहाँ पे है भाई मिशन? कितना दूर है? भागो 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 यहाँ से. निकलो 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 निकलो. जाना काफी दूर है. ओ भाई जान छोड़ो यार. जाने दो हमें. हम पहुंचने वाले हैं. ओके. नहीं 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 भाई हमें जाने दो यार. हम आएंगे मारने के लिए आपको. चलो भाई. अरे नहीं इधर आ गया पीछे. मैं आ गया गलत. आज यार गलत आ गया. ये ले तुझे मरने का शौक है. मरने का शौक है तुझे. हमारा पीछा करेगा तू. ऐसे हमारे पीछे पड़ा हुआ है. तुझे मार देंगे भाई. वैम्पायर है हम. I cannot enter. यार ये क्या. चलो भाई दूसरी साइड से चलते हैं. जाना भी यहीं से है. चलो भाई मारना ही पड़ेगा. मारना ही पड़ेगा. मारना ही पड़ेगा भाई. ओ भाई ये ले. ओ नहीं ओए. ओ मर गया. ये रह गया. ये ले. ये ले. ये ले. ये ले. आजा आज. क्या कर लेगा तू? क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? मारेगा हमें. छुट्टी कर बेटा. लूट दे दे अपनी. चलो भाई अंदर चलते हैं.
So Priwen never left Doris's theater after they invaded. They must be holding Edgar here in their new headquarters. यहीं कहीं होल्ड किया होगा, चलते हैं। ये सही है भाई, फास्ट ट्रैवल। Ain't safe here for a gentleman. Look at it! Vicious bugger! ये ले भाई, ये ले भाई, ये ले, ये ले। तू रोकेगा, तू रोकेगा। ये भाई, ओ देख पागल हो गया। आजा बेटा। रोकेगा, मैं कोई नहीं रोक सकता भाई। चलो भाई, अबे फिर से फाइट। Step away, sir. I said go back home! Burn it, boy! नहीं भाई, वापस नहीं जाना हमने। ये ले, ये ले। Have beef, brothers! ये ले, ये ले, ये ले भाई, तू तो मारना। अब इसकी बारी है। तू मार भाई, तूने तंग किया हुआ है। ये ले, ये ले। तंग किया हुआ भाई, आजा। Stay back, beast! ये ले, ये ले। तू मारेगा, ये ले। मार गया भाई। टूट उठाते हैं। जाना कहाँ से था? तो लॉक है। यहाँ कहीं नीचे है भाई। डॉक्टर शिवानजे कहीं नीचे है। कोर्ट है भाई। Doris Fletcher was about to become a disaster. I'm getting close to having all the evidence. चलो भाई, अब जा सकते हैं हम। पहले बंद था। आगे ना हम नीचे यहीं पे हैं कहीं डॉक्टर स्विंजे। तो लॉक है भाई। It's locked. पहले फाइट वगैरह करके फिर बचाना पड़ेगा लगता है। अल्लाह भाई, इससे फाइट करनी पड़ेगी। Turn around, sir. I'll kill you! पहले वार्निंग देते। क्या करेगा? मारेगा। चल चल, अबे मारा तुमने। All of you bloody leeches need killing. I'll send you to hell. तू मारेगा। आजा आजा, करीब आजा, करीब आजा। ये ले, ये ले। बस इतनी सी बात है। चलो गाइस चलते हैं। It's locked. विलियम मार्शल्स।
जो भी है भाई, हमने बड़ा पढ़ना है इसको पूरा। Blood of a pure heart, garlic, blood of a king. I don't understand. Perhaps this is what McCullum drank. Vampire Night। चलो भाई, चलते हैं बाहर। ये रही ट्रेल भाई, यहीं पे है डॉक्टर स्वेंजे भी। Edgar. Edgar, can you hear me? Jonathan, is it really you? Easy. Easy. Save your strength. I'm getting you out of here. इसको बचाना है। Don't try to spare me. As a physician, I know all too well when it's too late. Punctured lung, broken ribs, and internal bleeding. An accurate diagnosis, wouldn't you say? Edgar, what happened? They wanted me to confess. Beat me black and blue. Jeffrey McCullum ambushed me at the Pembroke Hospital. He was convinced you and I were responsible for the Skal epidemic. I never imagined that self-righteous fanatic would dare to attack us in the open. What became of him? To prove him wrong, I let him go. Really? Are you sure that was the wisest course of action? Time will tell. The most intriguing part of his accusation was that you and I were the pawns of some ancient vampire. William Marshall. Yes, they tortured me to make me confess the same nonsense. I think you're hiding something, Edgar. What do you mean? William Marshall, for example. You speak of him as if you know him. How is that? Jonathan, I cannot say I'm ready for another round of questions. Why would the Guard of Priwen believe you and I created the vampire epidemic? Maybe due to our profession. Because I offered you shelter in my hospital. What can you tell me about William Marshall? Not much. History paints the story he was the greatest knight who ever lived. Amongst the immortals, he had a yet greater legend. Why would he deserve such a reputation? I cannot say. The Brotherhood of St. Paul's Stole has next to no intelligence on him. All I know is that he's supposed to be the oldest of all the British vampires. Why is the Guard of Priwen so obsessed with him? He was the only ancient vampire to escape the first great hunt launched by the Guard of Priwen in 1854. They believe he's an evil creature plotting his return. Back. While investigating the epidemic, I read some of McCullum's findings. I think you have some explaining to do. I have nothing to hide, Jonathan. Nothing at all. Do you remember when we suspected Sean Hampton of killing Harriet Jones? Yes. The terrible episode that came as a shock to us all. Harriet Jones faked her own death. When I found her in the sewers, she confessed she wanted everybody to pay for what happened to her. That woman was extremely bitter.
full of hatred and festering anger. Do you know Doris Fletcher's real name? No, I'm afraid not. Her real name was Doris Jones. She was the daughter of Harriet Jones. What do you want me to say, Jonathan? Doris Fletcher visited her mother at the Pembroke Hospital. That's how she first got infected. I know nothing about that. Miss Fletcher once came to visit the sick. That is all I know. No, Edgar, there is more. Doris Fletcher was Harriet Jones's daughter. They exhibited the same symptoms: blind hate and strong physical mutation. What does this sad story have to do with us? Come on, Edgar. Don't you see the pattern here? The epidemic, the link between Doris and Harriet, the suspicion of McCullum? How could I? I never saw Harriet Jones again after she fled the hospital. Do you know where we are? Doris Fletcher's theater. This is where that hateful creature plotted to spread the epidemic across London. I only briefly met Miss Fletcher once when she visited the Pembroke Hospital. You say it was to see her mother. She seemed like such a sweet and graceful woman. My point exactly. The disease turned her into a bitter soul, driven by vengeance just like her mother. A symptom of all the infected patients. Certain diseases are known to produce similar effects. Rabies, for example. And rabies is not the devil at work. Doris and Harriet shared more than a hidden family bond. They were the embodiment of the epidemic and are linked to the Pembroke Hospital. Come on, Edgar, this is no coincidence. I swear I'm at a complete loss. All I did was administer vampire blood to cure old Harriet. There was no evil plan, no diabolical plot. You did what? I tested the regenerating and healing properties of vampire blood on Harriet Jones. My only intention was to find the cure for influenza, I swear. Whose blood did you use? William Marshall's? Mine? Lady Ashbury's. While transfusing her with human blood, humanely appeasing her hunger, I also kept samples of her blood for my research. You used her blood on Harriet Jones? My God, Edgar, that's unethical. You betrayed 2 of your patients at the same time. How dare you judge me? Must I name the alarming list of your victims? We are both deceivers. But at least I know I'm a monster. You have worked beside me. You saw what I'm doing at Pembroke Hospital. Jonathan, you know I'm not an evil soul. Just another victim of this tragedy. Yes, your death is imminent, Dr. Swansea. But I swear, it will be quick. I already told you to call me Edgar. Am I no longer your friend? I believe you never have been, sir. You have lied to me at every step and betrayed the trust of a woman I cherish. You and the lady? Really? Why, I should have seen it coming, I suppose. May I add that I welcome this? The biting, I mean. You have your wish. Is it going to hurt? I always wondered if you... ओ भाई, हमने फाइनली एडगर को मार दिया। इसने टेस्ट किया था भाई एशबरी का ब्लड उन सब पे भाई। चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट हो गया, तो अभी हम लाइव स्ट्रीम को एंड करते हैं, कहीं पे अपनी गेम को सेव कर लेते हैं। तो कल जो होगी वो हो सकती है लास्ट एपिसोड, आई थिंक सो हो सकती है।
आने वाली नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम हमारी आखिरी हो सकती है। तो अभी हम गेम को कहीं पे सेव करते हैं। क्या गाइस, यहाँ कहीं पे भी कोई होना चाहिए, हाइड आउट होना चाहिए जहाँ पे हम अपनी गेम को सेव कर सकें। आज की लाइव स्ट्रीम लगभग 3.5 घंटे तक तो होगी। क्या करता हूँ मैं, हम आज एंड करते हैं। और भाई डॉक्टर ने क्या किया यार, क्या गंद किया। एशबरी का जो ब्लड है वो टेस्ट वगैरह कर रहा था और वो उसने पेशेंट्स पे लगा दिया और वहाँ से वो फैलता फैलता कहाँ फैल गया, इस वजह से हमने इसको मार दिया। चलो भाई, लूट मिल रही है हमें। हम पहले जाएंगे पास वाले हाइड आउट पे, यहाँ से लेफ्ट फिर राइट। So Harriet Jones became the original carrier when Edgar gave her vampire blood. I must tell Elizabeth. चलो भाई, चलते हैं अपने हाइड आउट में। लोडिंग शोडिंग क्या हो रही है, अभी गेम को सेव भी करना है मैंने। वापस चलते हैं। यहाँ पे कुछ शायद हम क्राफ्ट कर पाए। वो एनालाइज करेंगे। भाई ये जोन सा है भाई, कोई एंटीटोड है। अब देखो ये क्या काम करेगा, आई डोंट नो। ओ फॉर बेस्ट। चलो गाइज, अभी आज की लाइव स्ट्रीम को एंड करते हैं। यहाँ पे कोई और चीज़ें देख लेते हैं, अपग्रेड वगैरह करते हैं। जो हमारे पास एक्सपी काफ़ी ज़्यादा आ गए होंगे, 7000 एक्सपी आ गए होंगे, तो काफ़ी सारी चीज़ों को हम यहाँ पे अपग्रेड कर लेते हैं। ये भी अपग्रेड हो सकता है, लेकिन इतने एक्सपी नहीं है। ये क्या करेगा, यू कट थ्रू दी फ्लैश ऑफ योर प्रे। हैंड ही है वैसे देखा जाए तो। को भी देख लेते हैं। नहीं ये भी नहीं हो रहा। हेल्थ को अपग्रेड कर लेते हैं। नो भाई, कंफर्म करते हैं। ओके गाइस, तो ये थी आज की लाइव स्ट्रीम। आई होप आप लोगों को वैम्पायर गेम में मज़ा आया होगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट जो इसकी एपिसोड है वो हो सकता है कि एंडिंग एपिसोड हो, तो ये गेम ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद जो हमारी दूसरी गेम्स हैं हम उनको प्ले करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल पे आए हो, अगर आप लोगों ने पूरी स्ट्रीम देखी है और यहाँ पर देख रहे हो तो मेरी बात सुनो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे प्रेस कर लो, इस लाइव स्ट्रीम को लाइक कर दो, इस एपिसोड को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। आज यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वाचिंग। एंड करते हैं अपने इस आज की स्ट्रीम को। थैंक यू सो मच वाचिंग, और लगभग 3.5 घंटे की हो चुकी है। लव यू गाइज। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में। बाय बाय।